So let's get started. We had left here last time. We were doing Kessler syndrome. Kessler syndrome is done by Donald Kessler of NASA, and he had basically given the idea that one collision will lead to many more, and then further many more. So this will be the idea of space debris. Now we have to start with satellites. Okay, हमने देखा था that in a rocket, right, there were 1, 2, 3 or 4 stages, whatever stages were there, and finally there was the satellite at the top. Okay, so what is the satellite doing basically? This is the question, that why do we need satellites? What are they useful for? So satellites carry payloads such as transponders. Transponders are basically transmitters and responders. So you can do a word breakdown here. आप देख सकते हो. This is transmitter and responder. So it becomes what? It becomes a transponder. Okay. अब इसकी applications तो हमें पता ही है. Communication में, weather prediction, astronomy, remote sensing, navigation, defense. ये भी हमने देखा था in restricted positioning of GPS. And then anti-satellites. Anti-satellites are satellites that kill other satellites. So they are also a reason for the generation of space debris. Okay. All right. Now, what are the components of a satellite? तो देखो, कुछ तो transponder है, ये हमने डिस्कस कर लिया already. There is a transponder, right? There is a control and command system. Obviously, जैसे लॉन्च व्हीकल में एक कमांड सिस्टम था, यहाँ भी एक कमांड सिस्टम होगा जिससे हम सैटेलाइट को ऊपर नीचे करेंगे. देन आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज अ सोलर पैनल. नाउ सोलर पैनल व्हाई? फॉर एनर्जी, एंड फॉर बैकअप एनर्जी वी हैव लिथियम आयन बैटरी. नाउ देयर आर सर्टेन सेंसर्स आल्सो, sensors to sense whatever the satellite is there to sense in the space. And there is a liquid apogee motor. This also we have discussed. This is to shift the satellite or move the satellite a little bit. For instance, when we want to shift from geosynchronous transfer orbit, then we can use this liquid apogee motor. अब हमें transponders पढ़ने हैं डिटेल में. We have to understand transponders. Okay, so transponders are transmitter and receiver or transmitter and responder. Okay, so it will transmit something. तो मान लो ये अर्थ है, अर्थ से हम कुछ ट्रांसमिट करेंगे यहाँ एंड कुछ वापस आएगा, राइट? देयर विल बी कम्युनिकेशन बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ. This is why this is the main purpose of using a transponder, कि एक तरफ से communication हो, like one side and the other side, right? This is clear. Now, to understand what frequency bands are and what exactly transponders do, कितनी frequency पे transponder काम करता है और कितने पे नहीं करता, main purpose is clear. It will transmit some data from Earth and it will get some data back, right? एक एंटीना होगा, एक सैटेलाइट होगी, तो ट्रांसपॉन्डर तो होगा ही. अब वो कौन सा ट्रांसपॉन्डर कैसे काम करता है, बैंड्स क्या होते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स. देखो, अगर एक स्टार है, कोई भी स्टार, इट कुड बी द सन आल्सो. दिस थिंग इज नॉट इन द स्लाइड्स बट इट्स जस्ट कंसेप्चुअल, आपको लिखने की जरूरत नहीं है आगे. दिस इंफॉर्मेशन इज देयर, इट्स जस्ट रिटन फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? तो अगर कोई स्टार है तो स्टार विल हैव सर्टेन रेडिएशन, राइट? अब रेडिएशन क्या होती है, मतलब रेडिएशन इज बेसिकली लाइट. ओके, लाइट दैट इट इज emitting और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो देयर इज अ कंप्लीट सेट ऑफ रेडिएशन दैट अ स्टार emits. अगर हम सन को देखें, इफ यू लुक एट द सन, इट एमिट्स विजिबल लाइट जिससे सनलाइट मिलती है. आपने ये भी सुना होगा दैट इट हैज यूवी रेज जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है. आपने ये भी सुना होगा दैट इट हैज इंफ्रारेड, राइट? तो एक स्टार जब चीजें एमिट करता है, इट हैज मेनी थिंग्स. Okay, those many things that are emitted, the many things that are emitted from the star are known as this electromagnetic radiation. It is of many types: X-ray, gamma ray, ultraviolet, visible, infrared, microwave, radio wave. This is basic geography, but I'll still revise it with you. एक बार हम फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है?
अब ये सारी रेडिएशन है, तो इनमें फर्क क्या है? जब स्टार ये सारी रेडिएशन निकालता है तो हाउ इज एक्सरे डिफरेंट फ्रॉम यूवी रेज? तो देखो, ये हमारा स्टार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. व्हाट डज दिस मीन? इट इज द कंप्लीट स्पेक्ट्रम या कंप्लीट मतलब रेंज ऑफ द radiation that is emitted by a star. So it is the complete range of the radiation that a star emits. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो the star can be classified. यहाँ पे there is visible light. Visible light वो है जो हमें दिखती है. इसमें भी you must have heard this term Vibgyor. तो visible light, like I have told you before also, white light is mixture of all colors. तो कौन कौन सी lights हैं? Violet, indigo, blue, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ये विजिबल लाइट है. ठीक है. अब विजिबल इज बिटवीन वायलेट एंड रेड. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड इंफ्रारेड, देयर इज समथिंग कॉल्ड अल्ट्रावायलेट. ठीक है. अगर कोई भी लाइक यू नो सम और द अदर एमिशन इज हैपनिंग, लाइक यहाँ पे व्हाट वाज हैपनिंग, देयर वाज एमिशन ऑफ सर्टेन रेडिएशन. सो इफ रेडिएशन इज एमिटेड, okay, if radiation is emitted, it will be in the form of a wave. Okay, it will be in the form of a wave. Now this is what a wave looks like. This. Okay, got it? अब wave की एक length है from this point to this point. This is the wavelength or lambda. This symbol stands for lambda, right? So there is a wavelength, and number of times this wave can generate itself in 1 second is called its frequency. तो एक सेकंड में कितनी बार ये वेव रिपीट होती है वो फ्रीक्वेंसी है, एंड इस वेव की लेंथ कितनी है वो वेवलेंथ है. गॉट इट? ओके. नाउ वेवलेंथ देखो, अगर मैं यहां देखूं, इफ आई लुक एट दिस वेव, दिस मे बी इफ दिस इज 1 सेकंड का टाइम, ठीक है, आई विल जस्ट राइट विद अ डिफरेंट पेन. इफ दिस इज 1 सेकंड का टाइम, सो द नंबर ऑफ वेव्स हियर आर मेनी, राइट, एंड द वेवलेंथ इज स्मॉल. अगर ये ऐसा होता तो द वेवलेंथ वुड बी लार्ज बट द फ्रीक्वेंसी वुड बी लो. यहां पर क्या केस है? यहाँ पे एक सेकंड में बहुत बार वेव्स आ रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, मेनी टाइम्स द वेव्स आर कमिंग, बट जो वेवलेंथ है वो छोटी है. एंड आई थिंक यू कैन रिलेट कि वेवलेंथ छोटी होगी तभी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो पाएगी. इफ द वेवलेंथ इज स्मॉलर, इफ द वेव रादर देन दिस इट लुक्स लाइक दिस, इफ द वेवलेंथ इज स्मॉलर इट कैन कम मेनी टाइम्स इन 1 मिनट, इन 1 सेकंड, सॉरी. So wavelength and frequency are inversely proportional. ज़्यादा wavelength मतलब कम frequency, कम frequency ज़्यादा wavelength. There is an inverse relation. Now, energy of any wave, किसी भी wave की energy अगर हम classify करें तो उसका formula है h into c by lambda. You don't have to remember this. h is a constant, k. c is a constant, it is the speed of light. तो constant है ये तो change नहीं होना. The thing here is lambda. तो अगर किसी wavelength की, if there is a wave, the wavelength is inversely proportional to the energy. If the wavelength is high, it is like this, then wave will have less energy. I hope the proportionality तो समझ आ रही है. And since wavelength and frequency have this relation, so energy can be written as constant into frequency or constant divided by wavelength. So if in a wave, when I'm seeing the energy, if the wavelength is less, वेवलेंथ छोटी है, तो एनर्जी क्या होगी? मोर और लेस. इफ अ वेव हैज वेवलेंथ इज स्मॉल, सो व्हाट विल बी द एनर्जी? मोर और लेस. सेम विथ फ्रीक्वेंसी. तो ये बात आपको समझ आ गई है. तो इफ आई ड्रॉ टू वेव्स हियर, फर्स्ट आई ड्रॉ लाइक दिस, सेकेंड आई ड्रॉ लाइक दिस, सो ए विल हैव मोर एनर्जी एंड बी विल हैव लेस एनर्जी. दिस इज क्लियर? नाउ अब आपने ये चीज, यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म एक्सरे. एक्सरे मतलब क्या होता है? जब हम मेडिकल टेस्ट कराने जाते हैं तो वो एक्सरे लगाते हैं हमारी बॉडी पे और एक ब्लैक और व्हाइट इमेज आ जाती है, वो हमारी बॉडी को स्कैन कर लेता है. सो एन एक्सरे कैन पास थ्रू द बॉडी. व्हाई? बिकॉज एक्सरे हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट्स एनर्जी इज हाई. आपने सुना होगा कि एक्सरे से म्यूटेशन भी हो जाती है, एक्सरे से कैंसर भी हो जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस, इट इज हाई एनर्जी वेव. तो हाई एनर्जी वेव का क्या मतलब? हाई एनर्जी वेव मीन्स दैट द फ्रीक्वेंसी विल बी हाई एंड द वेवलेंथ विल बी लो. दिस मच इज क्लियर. दिस इज द केस ऑफ एन एक्सरे. अब अगर हमें एक्सरे पता है तो हम बाकी सारी देख लेते हैं. ये विजिबल लाइट थी. ये जो क्लासिफिकेशन है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये जो क्लासिफिकेशन है इधर, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट.
here there is high frequency. High frequency means there is higher energy. यहाँ पे there is lower energy. So if I look at the spectrum or the complete set of radiation that a star emits, इसमें जो गामा रेज होंगी they will have the most energy. फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट. अब देखो नाम से समझो, अल्ट्रावायलेट विजिबल में क्या था, विबग्योर था, इधर वायलेट था, here there is violet. अल्ट्रा मींस मोर देन वायलेट, अल्ट्रावायलेट वायलेट से ऊपर. तो जिस रेज में विजिबल से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी है उसे हमने कह दिया अल्ट्रावायलेट. और जिसमें रेड से थोड़ी कम एनर्जी है, बिकॉज इधर रेड है इधर वायलेट है, वायलेट से ज्यादा एनर्जी, रेड से कम एनर्जी. सो इफ अ वेव हैज मोर एनर्जी देन वायलेट इट विल बी कॉल्ड अल्ट्रावायलेट. इफ अ वेव हैज लेस एनर्जी देन रेड इट विल बी कॉल्ड इंफ्रारेड. एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन. गामा रेज में सबसे ज्यादा एनर्जी, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल लाइट. विजिबल में भी वायलेट में ज्यादा एनर्जी, रेड में कम एनर्जी, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव. ओके, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये प्लीज अच्छे से याद रखना, बिकॉज व्हेन वी स्टडी लाइफाई, लाइट फिडेलिटी, तब भी ये चीज बहुत काम आएगी. ओके, व्हेन वी कंपेयर वाईफाई विद लाइफाई, दिस विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट. तो अब यहाँ रेडियो वेव लीस्ट एनर्जी, गामा रे मैक्सिमम एनर्जी. तो गामा रेज अगर हमें लग जाए तो इट कैन कॉज म्यूटेशन. एक्स रेज आर मोर स्लाइटली लेस हार्मफुल देन गामा रेज. यूवी रेज तो आपको पता ही है कि हार्मफुल है. विजिबल से हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट. विजिबल आवर बॉडी कैन टॉलरेट बिकॉज एनर्जी इज ऑप्टिमम. देन देयर इज इंफ्रारेड. अब देखो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हम कहां सुनते हैं, रिमोट में. जो वेव आपका रिमोट टीवी तक पहुंचाता है दैट इज अ इंफ्रारेड वेव. उसकी एनर्जी हमें ऑब्वियसली कम रखनी है बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन आवर हाउस होल्ड. इफ आई यूज यूवी रेज, if I use UV rays in a remote, then I will develop cancer. I will get this will hit my body, energy will be high, there will be a problem. But infrared I can use, right? तो जब भी मैं यहाँ से यहाँ जाता जाऊंगा, what will happen? The frequency is increasing this side because the energy is higher this side, as you can see, and the wavelength is increasing this side. Okay. तो अब हम वेव को देखते हैं. वेव को हमें सैटेलाइट के रिलेशन में क्या मतलब है. ये सैटेलाइट कोई वेव एमिट करेगी and our antenna will capture it and then our antenna will release some wave, transmission and response, transponder, transmitter and responder. तो अब हम जब देखते हैं कि जो एंटेना साइज है, अगर ऐसी वेवलेंथ होगी तो मुझे बड़ा एंटेना लगाना पड़ेगा ताकि पूरी वो कैप्चर हो जाए वेव. अगर ऐसी छोटी वेवलेंथ होगी ऐसी, तो कम एंटेना से भी काम चल जाएगा. सो एंटेना साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. सॉरी. Okay, so antenna size is directly proportional to the wavelength. ये बात समझ आती है? Okay, if the frequency is increasing, what does it mean? That there is more energy. More energy, अगर किसी चीज में एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा डेटा कैरी कर सकता है. Obviously, it can carry more data if it has more energy, right? तो डेटा ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, डेटा पर यूनिट टाइम के एक सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफर होता है, इस चीज को कहते हैं हम थ्रूपुट. So if the frequency is increasing, there will be more energy and there will be more throughput. Now, frequency का जो यूनिट है, that is hertz. Hertz means if there is one wave in 1 second, the frequency is 1 hertz. If there are 2 waves, it will be 2 hertz. Okay, this is the unit. तो above 11 gigahertz, गीगा का मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, आई होप यू अंडरस्टैंड. देयर इज किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाहाइट. तो गीगा इज अ यूनिट. अबव 11 गीगाहर्ट्ज, इससे ज्यादा वेवलेंथ बहुत स्मॉल, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई, समथिंग लाइक दिस, राइट. तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड रेन फेड. व्हाट इज रेन फेड? रेन फेड मींस कि यहाँ पे जो ये वेव है इसके साथ द रेन पार्टिकल्स विल इंटरप्ट. सॉरी, ये मेरे पीछे छुप गया शायद. So here the rain particles will interrupt this wave. Okay. So अब क्या होगा, जो डेटा ट्रांसफर है वो खराब हो जाएगा because there will be rain fade. इसका एग्जांपल आपने अपनी रियल लाइफ में देखा है, जब DTH कनेक्शन में टाटा स्काई या whatever you are using, जब वहां पे रेन होती है the transmission becomes difficult. ट्रांसमिशन नहीं आती, वो रेन पे टीवी पे आना बंद हो जाता है. That is because of the idea of rain fade. The rain particles, and
रेन पार्टिकल्स आर एग्जिस्टिंग, जब वो बारिश ज्यादा होगी तो दे विल बी देयर। जब हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर देंगे, that means why are we putting the frequency high? Because I want to give more data. Okay, so if I want to give more data, the frequency is higher and there will be an idea of rain fade. I hope this much is clear. Rain fade, higher frequency. Rain fade happens when the frequency is high and the wavelength is very small. तो अब हमें क्या करना है? Ideally तो फिर हर बारी frequency बढ़ा दो, because more data transfer can happen. But I have to find the right balance. मुझे एक बैलेंस निकालना है बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द रेन फेड। तो मैं बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकता, मैं बहुत कम भी नहीं कर सकता। ओके, दिस मच इज क्लियर। नाउ जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने के लिए हम वेव्स यूज करते हैं, दे आर माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये वो वेव्स हैं जो हम सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब ये माइक्रो और रेडियो वेव्स में भी अंदर बैंड्स हैं, इसके अंदर की डिवीजन है। जैसे मान लो रेडियो वेव और लेट्स से माइक्रोवेव इज from 300 megahertz to 300 gigahertz। समझ आ रहा है? ये रेंज हो गई फ्रीक्वेंसी की, जिसको मैं कहूंगा माइक्रोवेव। अब इस माइक्रोवेव में भी देयर इज क्लासिफिकेशन, लोअर साइड पे एल बैंड, फिर एस बैंड। तो ये है कंसेप्ट ऑफ बैंड। तो अब हम देखते हैं, अगर हम नीचे जाएं, मतलब हम फ्रीक्वेंसी कम कर दें, एल बैंड पे जाएं, तो द बैंडविड्थ signifies what? The amount of data that is being transferred. So bandwidth is small. Data transfer is small क्योंकि मैंने frequency कम कर दी. Antenna size will be large. Why will the antenna size be large? Because the wavelength will be large. Frequency is less, so wavelength will be large. Wavelength large means antenna size is large. Bandwidth small, मतलब data transfer is less. And attenuation. Attenuation means the ability to get interfered. So attenuation here is less. लेस अटेनुएशन, मतलब यहाँ पे रेन फेड जो है दैट विल बी लेस। ओके, तो ये है आपका लेस लोअर साइड के बैंड्स पे। एल बैंड जो लोअर बैंड है उसमें द डेटा ट्रांसफर विल बी लेस, एंटेना साइज विल बी लार्ज, बट जो रेन फेड हो रहा है वो बहुत कम होगा। सो व्हाई विल आई यूज द एल बैंड? आई विल यूज इट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें मैं रेन फेड अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसमें डेटा उतना नहीं चाहिए बट द इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। इधर है के ए बैंड। के ए बैंड का बैंडविड्थ इज वेरी लार्ज, मतलब डेटा काफी दे रहा है। एंटेना साइज इज स्मॉल, एंटेना साइज इज स्मॉल, बट द अटेनुएशन, आई जस्ट शिफ्ट दिस अप। ओके, द अटेनुएशन मतलब द रेन फेड इज मोर in a higher band because the frequency is high, the rain fade will be more। तो अगर मुझे ज्यादा डेटा ट्रांसमिट करना है, जैसे मान लो मुझे पूरा टीवी ट्रांसमिट करना है, तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा, बट देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ रेन फेड। नाउ दीज आर द बैंड्स, एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, के यू, के एंड के ए, ये हैं बैंड्स। ठीक है, अब इन बैंड्स के क्या होगा? ऑब्वियसली यू कैन सी यहाँ रेड भी बना हुआ है, तो इसमें कम एनर्जी होगी, इसमें ज्यादा एनर्जी होगी। फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग हियर। What are these bands? These are part of microwave and radio wave. माइक्रोवेव की अंदर की क्लासिफिकेशन है ये, एक बड़ा माइक्रोवेव, उसके अंदर एक बैंड। नाउ तो अब मैं बात करूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड। पहला है एल बैंड। एल बैंड में क्या है? फ्रीक्वेंसी इज लेस। फ्रीक्वेंसी इज लेस मतलब एनर्जी इज लेस, रेन फेड इज वेरी हाई। तो कहां यूज करते हैं हम इसे? जीपीएस में, बिकॉज जीपीएस में यू नीड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। डेटा बहुत ज्यादा नहीं है बट हम रेन फेड अफोर्ड नहीं कर सकते, सो एल बैंड we will use GPS. Then there is the S band. S band यहाँ यूज करते हैं, NASA uses it for the communication with the International Space Station, right? S band में NASA does communication with the International Space Station. अब आप ये सोच रहे होगे कि communication भी L band में क्यों नहीं कर ली? अगर मैंने communication भी L band में कर ली, right, और मैंने GPS भी L band में कर लिया, तो क्या हो जाएगा? There will be the phenomenon of interference. One data will interfere with other. तो डेटा कंफ्यूज होने की पॉसिबिलिटी है, तो मुझे बैंड में क्लासिफिकेशन प्रॉपरली करनी है, राइट? आई हैव टू डू प्रॉपर क्लासिफिकेशन इन बैंड्स। तो एल बैंड फॉर जीपीएस, एस बैंड नासा यूजेस फॉर वेदर रेडार्स, शिप रेडार्स एंड कम्युनिकेशन विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सी बैंड इज द कम्युनिकेशन बैंड। सी बैंड, सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। तो ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो हमारे टीवी नेटवर्क थे विच वर नॉट डीटीएच, जिसमें आपने देखा होगा केबल होता था, बहुत बड़ा एंटेना लगा होता था, केबल होता था, राइट? तो केबल के केस में वी वर यूजिंग दिस सी बैंड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टीवी नेटवर्क।
ठीक है, एंड इट इज लेस ससेप्टेबल टू रेन फेड देन KU बैंड। KU बैंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसमें रेन फेड ज्यादा हो सकता है। अब आते हैं X बैंड। X बैंड इज मेनली यूज बाय द मिलिट्री फॉर मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड पर्पसेस। देन आता है KU बैंड, हेयर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, हेयर इट इज यूज फॉर DTH। DTH मींस डायरेक्ट टू होम। तो अब अगर आप नोटिस करो, राइट, इफ यू नोटिस यू विल रियलाइज दैट जब हम केबल टीवी देखते थे, व्हेन वी यूज्ड टू वॉच केबल टीवी, तो केबल टीवी कौन से बैंड में होता था? C बैंड। तो द एंटेना यूज्ड टू बी लार्ज। जो DTH है, DTH में फ्रीक्वेंसी इज मोर। सो हमारे घर पे जो एंटेना लगा होता है वो छोटा सा ही लगा होता है, DTH की आप डिश देख लो, एंटेना इज छोटा, बट यहां सिंस द फ्रीक्वेंसी इज लेस, देयर इज लेस चांस ऑफ रेन फेड। यहाँ पे रेन फेड जो है वो कम होगी, बट यहाँ पे द आइडिया ऑफ रेन फेड इज मच मोर। तो DTH में देयर इज मोर चांस कि हमारा टाटा स्काई रुक जाए बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज द KU बैंड हैज मोर फ्रीक्वेंसी। देन देयर इज KA बैंड। KA बैंड इज द फाइनल बैंड, द बिगेस्ट बैंड। अब इसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इफ इट हैज टू मच फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा? इसमें रेन फेड बहुत ज्यादा होगा, डेटा भी बहुत ज्यादा होगा, बट रेन फेड भी बहुत ज्यादा होगा। तो हम इसे कहाँ यूज करते हैं? वी यूज इट फॉर क्लोज रेंज टारगेटिंग रेडार्स ऑन मिलिट्री एयरक्राफ्ट। जब हमें ज्यादा डिस्टेंस जाना ही नहीं तो रेन फेड हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमें डेटा ज्यादा चाहिए। सो दीज आर द 6 बैंड्स, L बैंड, S बैंड, C बैंड, सॉरी L बैंड, S बैंड, C बैंड, X बैंड, KU एंड KA। ये 6 बैंड हैं क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं हम इसरो पे कि इसरो ने इंडिया के लिए क्या क्या अचीव किया है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स दैट इसरो इज यूजिंग। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ सैटेलाइट दैट इसरो इज यूजिंग? ओके, पहला है सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सर्वे करना है हमें नेचुरल रिसोर्सेज का, तो यहाँ पे हम कौन सी सैटेलाइट यूज करते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग मतलब वी विल डू सर्वे ऑफ, मतलब हम सेंस करना है, हमें पूरी अर्थ को देखना है, बार बार तेज तेज घुमाना है। इसकी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट पोलर ऑर्बिट लुक्स लाइक। ये देखो, ऐसा है पोलर ऑर्बिट। तो वो बहुत तेज अर्थ को सर्कुलेट करता है, बट पूरी अर्थ को कवर कर लेता है, और वो एक ऊपर भी पोल से जा रहा है, नीचे भी पोल तक जा रहा है। तो दिस इज द पोलर ऑर्बिट। इट विल डू रिमोट सेंसिंग। मुझे पूरी अर्थ की सेंसिंग करनी है, पूरे अर्थ की मैपिंग करनी है, तो मैं यूज करूंगा पोलर ऑर्बिट। एंड देखो अब ये भर देगा पूरी अर्थ को, लाइक द एंटायर अर्थ इट विल फिल एंड द एंटायर अर्थ इट विल बी एबल टू मैप, राइट। तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो इस तरह की सैटेलाइट्स हैं। दे आर वेरी फास्ट, बट वह फास्ट क्यों है? ताकि हम पूरी अर्थ की मैपिंग कर सकें, राइट। दिस इज रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज अ पोलर ऑर्बिट। इनको हम किन किन चीजों के लिए यूज करते हैं? इनको हम यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने मैप करना है कि कितनी नेचुरल रिसोर्सेज है, तो मुझे पूरा एरिया कवर करना है एंड आई हैव टू डू सेंसिंग। मुझे मिनरल प्रोस्पेक्टिंग करनी है, देखना है कि मिनरल्स हैं या नहीं है। फॉर दैट आई विल अगेन यूज दिस पोलर सैटेलाइट। इनके नाम क्या है? रिसोर्स सैटेलाइट नेम बाय इसरो। वर्ड ब्रेकडाउन करोगे समझ आ जाएगा, इट इज फॉर मिनरल प्रोस्पेक्टिंग। कार्टोग्राफी, मुझे मैप बनाना है तो मुझे पूरी मैपिंग करनी पड़ेगी, पूरा देखना है जल्दी जल्दी, राइट। तो देयर इज कॉल्ड कार्टोसैट। एंड कार्टोसैट से रिलेटेड टर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एफ कर लेना इसको, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। एंड ये इस GIS या जियो स्पेशल पोर्टल हमने जो बनाया रिसेंटली, दैट इज कॉल्ड भुवन। मैप माई इंडिया एंड इसरो के बीच में कोलैबोरेशन है। It is using geographical data and the spatial data from Earth, or rather from India. तो मैप माई इंडिया और इसरो ने कोलैबोरेट करके बनाया जियो स्पेशल पोर्टल। जियो स्पेशल पोर्टल इज फॉर जियोग्राफिक डेटा, ओके। जिसमें मुझे मैप्स बनाने हो तो कार्टोसैट, मुझे रिसोर्सेज देखने हो तो रिसोर्स सैट, मुझे नेचुरल रिसोर्सेज देखने हो, फॉरेस्ट देखने हो, एग्रीकल्चर देखना हो, वेटलैंड देखना हो, आई विल यूज पोलर सैटेलाइट, ओके। मुझे ओशनोग्राफी देखनी है, मुझे सारे ओशंस को ऐसे स्टडी करना है, तो आई विल यूज ओशन सैट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सरल। सरल इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड CNES. CNES is the agency of France. CNES and ISRO, they have collaborated for सरल, okay. अब सरल में there is 2 instruments, Argus and Altica. सैटेलाइट फॉर आर्गस एंड ऑल्टिका। मैं कहा था जब भी इसरो नाम रखता है वो बहुत ऐसे रखते हैं कि आप नाम पढ़ के याद कर सकते हो। इट हैज 2 इंस्ट्रूमेंट्स, आर्गस एंड आल्टिका। ये कैसे काम करते हैं दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट,
बट ये बेसिकली ये सैटेलाइट देखती क्या है, इट लुक्स एट ओशन सर्कुलेशन, ओके, ओशन सर्कुलेशन। देन एनवायरनमेंट में अगर मुझे पॉल्यूशन मैनेजमेंट देखनी है तो भी मुझे बार बार पूरी अर्थ देखनी पड़ेगी। तो इन दिस केस ऑल्सो आई विल यूज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग। इंडिया करंटली डज नॉट हैव अ डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज सैटेलाइट, एक कोई डेडिकेटेड सैटेलाइट हमारे पास नहीं है, यूएस, चाइना और जापान के पास है। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं चीजों से आता है कि is India the first nation to do this, is India the second nation to do this, does any other Asian country have this, etc etc। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको जहां भी मिले ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने नोट करनी है। ओके, नाउ इंडियन रिमोट सेंसिंग में देयर इज आल्सो अ न्यू सैटेलाइट व्हिच इज निसार। निसार इज नासा एंड इसरो का कोलैबोरेशन, एनआई, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। सिंथेटिक अपर्चर मींस एक ऐसा रेडार जो सिंथेसाइज करके दो बैंड देख ले। सिंथेसिस मतलब सिंथेसाइज मींस जॉइन, सो इट कैन लुक एट टू बैंड्स एट वंस। तो इट कैन लुक एट द एल बैंड एंड एस बैंड। ये एल बैंड कम्युनिकेशन भी कर सकता है और एस बैंड कम्युनिकेशन भी कर सकता है, एंड इट इज द कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड इसरो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है पोलर सैटेलाइट का तो ये आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड अगेन मैपिंग, इफ आई हैव टू डू हजार्ड मैपिंग ऑफ डिजास्टर प्रोन एरियाज, तो मैं चाहूंगा कि अगर मैपिंग करनी है तो दी सैटेलाइट शुड बी क्लोज टू अर्थ ताकि वो आराम से देख सके। अगर मैं बहुत दूर की सैटेलाइट को कहूंगा कि मैप देखो अर्थ का, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन अ लिटिल बिट डिटेल ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर एक सैटेलाइट अर्थ से बहुत दूर है लाइक दिस, ठीक है, दिस इज इन लेट्स से जियो स्टेशनरी, तो इसकी एडवांटेज क्या है, इसका मतलब है एंटेना फिक्स्ड है, एंटेना में फिक्स रख सकता हूं, तो इसको मैं यूज करूंगा कम्युनिकेशन के लिए, बट इसको मैं नहीं यूज करूंगा मैपिंग के लिए बिकॉज ये बहुत दूर है। इसको कितना अच्छा कैमरा चाहिए होगा, सॉरी मेरे पीछे छुप जाता है कुछ ना कुछ। मैपिंग के लिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा, व्हाई, बिकॉज इट विल नीड सच अ बिग कैमरा। दूसरी अगर मेरे पास पोलर सैटेलाइट है विच इज इन लो अर्थ ऑर्बिट लाइक दिस, तो इट इज वेरी क्लोज, यहाँ पे हो सकता है एंटेना फिक्स ना हो, मुझे कम्युनिकेट करने में दिक्कत आए, बट इट इज क्लोज टू द अर्थ। तो अगर मुझे मैप बनवाना है, अगर मुझे देखना है कि रिसोर्स है या नहीं ओशन में, तो मैं यहाँ यूज करूंगा पोलर सैटेलाइट विच इज क्लोजर। ये है मेन कंसेप्ट। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को हम कहाँ यूज करते हैं, वी कैन यूज इट फॉर सर्वे एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, कार्टोग्राफी, जियोस्पेशियल डेटा, बिकॉज क्लोज है अर्थ के, लो अर्थ ऑर्बिट में है, ओशनोग्राफी, सरल पोल्यूशन देखने के लिए, राइट। देन एल एंड एस बैंड से कम्युनिकेट करने के लिए, सिंथेटिक वो बनाने के लिए निसार हमने बनाया, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मैपिंग ऑफ डिजास्टर प्रोन एरियाज, ओके। देन देयर इज जीसैट। जीसैट इज व्हाट, जीसैट इज जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं, जीसैट, इनको कहाँ यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। बड़े लेवल पे वेदर देखना है हमें, लाइक वी हैव टू सी द बिग पिक्चर, तो वहां पे है वेदर। इसका एग्जांपल है इनसैट 3DR एंड इनसैट 3D, दीज आर द नेम ऑफ द सैटेलाइट, इनसैट 3D, इनसैट 3DR, ओके। कम्युनिकेशन के लिए एंटेना फिक्स्ड है, बढ़िया कम्युनिकेशन होगी। टेली एजुकेशन, एंटेना फिक्स रख के काम करना है, टेली एजुकेशन। टेली मेडिसिन, एंटेना फिक्स रख के काम करना है, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट में कहाँ, नॉट फॉर डिजास्टर मैपिंग, नॉट फॉर डिजास्टर मैपिंग, बट सोचो जब अर्थक्वेक आता है, जब अर्थक्वेक आता है तो जितने सेल टावर होते हैं जिससे नॉर्मली हम सबके फोन चलते हैं, दीज सेल टावर्स फॉल, तो आप बता ही नहीं पाओगे बाहर के अर्थक्वेक आ गया, बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन, देयर इज अ ब्लैकआउट। तो देन देयर आर सर्टेन फोन्स कॉल्ड सैटेलाइट फोन्स, एंड अब जो एप्पल नया आईफोन बना रहा है, इट हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द सैटेलाइट डायरेक्टली। नॉर्मली क्या होता है कि ये फोन है या ये फोन है, फोन पहले कम्युनिकेट करता है सेल टावर से, सेल टावर कम्युनिकेट करता है एंटेना से, फिर एंटेना जाता है सैटेलाइट के पास, फिर वापस आती है इंफॉर्मेशन, फिर सेल टावर पे, फिर दूसरे फोन में। दिस इज व्हाट इज नॉर्मली हैपनिंग। बट जब आपका अर्थक्वेक आ गया तो ये भी गिर गया, ये भी गिर गया, तो नाउ यू नीड द फोन टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द सैटेलाइट। दिस इज कॉल्ड द सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। हर डिस्ट्रिक्ट में देयर इज अ सैटेलाइट फोन की डिवीजन, जिनका काम होता है सैटेलाइट फोन को मेंटेन करके रखना। इस सैटेलाइट फोन में, इन दिस सैटेलाइट फोन you will use geostationary satellite, you will use geostationary satellite because you want it to be fixed, okay। तो GSAT की applications ये हैं,
रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशंस एक तरफ हो गई। नाउ दिस इज बेसिकली टेली एजुकेशन। टेली एजुकेशन क्या है? डिस्टेंस लर्निंग है। जो उसका नाम है दैट इज वी सैट एड्यूसैट। एड्यूसैट से आपको क्लियर हो जाएगा दैट इट इज यूज फॉर एजुकेशन, एजुकेशन सैटेलाइट। बॉर्डर एरियाज में इसका काम है, फार अवे एरियाज में इसका काम है। वैल्यू एडिशन कर सकते हैं हम थ्रू द एक्सपर्ट्स। व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग राइट नाउ इज आल्सो इन सम वे टेली एजुकेशन, राइट? यू आर गेटिंग information through a satellite to first the cell tower, then from the cell tower to your phone, and you are watching me. तो मेरे घर से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो पहले एक सेल टावर पे जाती है या वाईफाई कंपनी पे जाती है, वो जाती है सैटेलाइट के पास, वापस आती है, एंड देन इट कम्स टू यू। तो ये टेली एजुकेशन वी विल यूज जी सैट। इसमें इसकी कुछ लिमिटेशन लिखी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंडिंग नहीं है, मैन पावर नहीं है, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होती, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती। जैसे यहाँ तो हम फिर भी टू वे कर पाते हैं, बट ऑफ कोर्स इफ वी वर इन एन ऑफलाइन प्लेस we would be able to do much more two-way communication, right? So these are the ideas of tele-education. Pre के लिए important नहीं है, मेंस के लिए अगर कभी आ जाए तो कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस आपको पता होनी चाहिए। देन देयर इज टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन में क्या है? अगर पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, ये सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर ले और सैटेलाइट हॉस्पिटल से कम्युनिकेट कर ले। हॉस्पिटल में कौन है? स्पेशलिस्ट है। देयर आर स्पेशलिस्ट इन हॉस्पिटल। दीज स्पेशलिस्ट कैन गिव द इंफॉर्मेशन टू द पीएचसी। तो ये भी कौन सी यूज होगी यहाँ पे? जी सैट, ठीक है। एंड इट इज ऑलरेडी बीइंग डन इन इंडिया, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? यू कैन मॉनिटर पेशेंट्स, यू कैन डू कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन। कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन मींस डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस करा सकते हो आप। जैसे आप एक जगह डॉक्टर को बिठाओ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक जगह बैठे, एंड वो कॉन्फ्रेंस से सारे एमबीबीएस डॉक्टर से कम्युनिकेट करके उन्हें बताया कि देखो नाउ वायरल फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जो वायरल फीवर का पेशेंट है उसको तुम्हें ऐसे ट्रीट करना है, राइट? देन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है लाइक ट्रॉमा और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो डॉक्टर कैन गाइड द पैरामेडिक्स। पैरामेडिक मतलब जो बंदा जैसे एम्बुलेंस चला रहा है उसको गाइड कर सकता है द डॉक्टर। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मीन्स व्हाट? गोल्डन आवर मीन्स दैट within the first hour if you are able to treat the patient, the chances of saving the life in a road traffic accident or trauma case are much higher. 1 घंटा अगर आपने निकाल दिया, राइट, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इट्स बेटर टू ट्रीट इन द गोल्डन आवर, राइट? देन ऑफ कोर्स इन केसेस ऑफ डिजास्टर्स भी तो हम बात कर सकते हैं थ्रू सैटेलाइट फोन टू डॉक्टर्स, तो ये भी टेलीमेडिसिन है। तो आई एम जस्ट सेइंग थिंक ब्रॉड। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, लेट्स सी आपको कितनी इकोनॉमी आती है और किसने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप टेलीमेडिसिन प्रोग्राम? ये आपने मुझे बताना है। इट्स वेरी लाइकली दिस ईयर, मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया ये। ओके, नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ टेलीमेडिसिन? क्या चैलेंजेस हैं? आप पेशेंट को डायरेक्टली एग्जामिन तो नहीं कर रहे, यू आर नॉट टचिंग द पेशेंट, फीलिंग हिज फीवर एक्सेट्रा। देन पेशेंट की साइकोलॉजी है। ऑनलाइन अगर आप टीचिंग कर लो तो इट्स स्टिल फाइन, बट अगर आप डॉक्टर से ऑनलाइन बात कर रहे हो तो साइकोलॉजी बिकम्स अ प्रॉब्लम। देन देयर इज डिजिटल डिवाइड, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हर जगह, एंड देयर आर टेक्निकल इश्यूज। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द आइडिया ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर आपको क्वेश्चन आए तो देखो, एक डिजास्टर साइकिल होता है। मींस के लिए बता रहा हूँ, प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, पहले किसी भी डिजास्टर से आप क्या करोगे? यू विल डू रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। यहाँ आप कौन सी सैटेलाइट यूज करोगे? पोलर सैटेलाइट। आप मैपिंग कर लोगे। देन यू विल डू प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, मतलब आप अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर लो। देन यू विल प्रिपेयर फॉर द डिजास्टर, कि डिजास्टर आने वाला है। दिस इज ऑल प्री डिजास्टर, डिजास्टर से पहले। देन आफ्टर डिजास्टर यू विल डू 3R response. आप response, you will file a response to the disaster, you will give relief to those people who are affected, and you will give rehabilitation. तो कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर मीन्स में क्वेश्चन आए, थिंक ऑफ एनी डिजास्टर। जैसे मान लो साइक्लोन मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ गया, तो आप साइक्लोन को पहले सोचो रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के टर्म्स में। देन आप सोचो उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर उसको प्रिपेयर होने के लिए, अर्ली वार्निंग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देन डिजास्टर हो जाएगा, उसके बाद हाउ कैन वी गिव बेटर रिस्पॉन्स, बेटर रिलीफ एंड बेटर रिहैबिलिटेशन। ये है प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। तो कभी आपको अगर GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन मिले, यू कैन यूज दिस डायग्राम टू जनरेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, राइट? तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करते हैं? मैपिंग ऑफ हैजर्ड प्रोन एरियाज, फोरकास्टिंग, पोस्ट डिजास्टर कोऑर्डिनेशन। डिजास्टर हो गया, अब लोगों से कम्युनिकेट करना है, एंड डिजास्टर नेट, दिसानेट, दिस इज अ नेटवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गगन। गगन स्टैंड्स फॉर GPS aided, GAGAN, GPS aided geo augmented navigation satellite system। ठीक है, हम अब इसको समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है।
GPS aided, we know what GPS aided is. जियो ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड मतलब बेटर करना या बढ़ाना, तो जियो ऑगमेंटेड मीन्स अर्थ पे उस अर्थ जितना या अर्थ लायक इसको बेटर करना. नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो हम नेविगेशन के लिए कौन सी सैटेलाइट यूज करते थे, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, तो वहां पे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो, दे आर यूजिंग दिस गगन फॉर सिविल एविएशन एंड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट. ठीक है, कैसे करते हैं हम देखेंगे. 3 जीसैट यूज होती हैं यहाँ पे. जीसैट का मतलब आपको पता है. एंड मेन पर्पस इज टू प्रिवेंट एयरलाइन एक्सीडेंट्स. जैसे MH371 एक्सीडेंट हुआ था वेयर द मलेशियन एयरप्लेन वाज शॉट डाउन. ऐसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज गगन. हाउ डज इट वर्क? ठीक है, सॉरी अबाउट दिस. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इट हैज कंडक्टेड सक्सेसफुल ट्रायल्स विद इसरो using LPV approach. What is LPV? LPV is localizer performance with vertical guidance. क्या होता है ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है. You just need to remember the term. Localizer performance with vertical guidance. अगर आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं तो क्या है, मान लो एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन को यहाँ पे लैंड करना है ऐसे. तो अभी क्या सिस्टम है कि यहाँ पे देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द रनवे जो एरोप्लेन से कम्युनिकेट करते हैं. ओके, एरोप्लेन को डेटा मिलता है कि अच्छा रनवे यहाँ पे है, तो फिर वो अच्छे से लैंड कर पाता है. दिस इज द करंट सिस्टम. गगन में हम क्या करना चाह रहे हैं, गगन में हम चाह रहे हैं कि ये जो कम्युनिकेशन होनी है, ये एरोप्लेन है, ये रनवे है, ये एरोप्लेन है, ये रनवे है, ये कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट हो जाए. मतलब यहाँ पर एक सैटेलाइट हो जाए, सैटेलाइट एरोप्लेन से भी कम्युनिकेट कर ले, सैटेलाइट रनवे से भी कम्युनिकेट कर ले, राइट, एंड देन इट कैन गिव द लैंडिंग. इसमें होगा क्या, अगर यहाँ पे फॉग है, अगर यहाँ पे कोई इशू आ गया रनवे पे, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन द रनवे एंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट इंटरैक्ट विद द एयरप्लेन, द सैटेलाइट कैन डू इट. फॉग ग्राउंड पे होती है, फॉग हवा में नहीं होती, लाइक बियॉन्ड अ पॉइंट देयर विल बी नो फॉग, राइट. तो फॉग से ये कम्युनिकेट, फॉग अगर ग्राउंड पे है तो उसकी जगह हम सैटेलाइट को यूज कर लें टू कम्युनिकेट, एंड दिस सैटेलाइट विल देन एड द लैंडिंग. तो जो लैंडिंग है यहाँ पे, लाइक दिस इज द रनवे, दिस इज द एरोप्लेन, दिस इज द सैटेलाइट, सैटेलाइट यहाँ भी बात कर ले, यहाँ भी बात कर ले, एंड एड्स द लैंडिंग एक्सपीरियंस. तो इस प्लेन की लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन मतलब ये प्लेन कहाँ है एग्जैक्टली, इसकी पोजीशन क्या है, एंड इसकी वर्टिकल गाइडेंस मतलब कितना ऊपर है ये जमीन से, इस टाइम पे कितने फीट पे है, कितने दूर उड़ रहा है, ये चीज आप सैटेलाइट से बात कर रहे हो. सो इट इज कॉल्ड LPV, localizer performance and vertical guidance. Okay, this you use in Gagan, and ये क्या कह रहा है, that it permits the aircraft to land at nearly equivalent to category 1 instrument landing system. category 1 instrument landing system है जो ये सिस्टम है, जो ग्राउंड पे सिस्टम था, that was called instrument landing system category 1. तो हमने ये देखा कि अगर हम सैटेलाइट से LPV यूज करें या ग्राउंड से इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यूज करें, they give the similar result, right, similar in terms of performance. इसकी obviously बहुत advantages है in terms of fog, in terms of reduced cost, etc. So this is the idea of Gagan, GPS aided geo augmented navigation system with LPV, localizer, location of plane, vertical guidance कि कितना ऊपर है प्लेन जमीन से, and helping it to land, similar to the category 1 instrument landing system. This is Gagan. Okay, ये किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है, एंड AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दे आर कोऑपरेटिंग फॉर दिस. ठीक है, इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम. ये बात तो समझ आ रही है, राइट. किसके लिए बनाया है ये इंपॉर्टेंट है, दिस यू प्लीज हाईलाइट दैट इट इज मेड फॉर इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज. सो दिस, इफ देयर इज अ क्वेश्चन लाइक गगन इज यूज्ड फॉर इंडिया ओनली, तो इट इज नॉट करेक्ट. नेबरिंग कंट्रीज इन द इक्वेटोरियल रीजन, वहां भी इसको यूज कर सकते हैं. एंड वर्ल्ड में अभी सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जिनके पास ये सिस्टम है. वन इज US, वन इज यूरोप, वन इज जापान, एंड द 4th इज इंडिया. सो US, यूरोप, जापान एंड इंडिया, इन चारों के अलावा ये सिस्टम, ये सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम नहीं है और किसी कंट्री के पास. ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ गगन. एयर ट्रैफिक कंट्रोल तो समझ आ ही रहा है, बट लाइक आई हैव टोल्ड यू, यू थिंक बिग.
इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मैनेज रोड एंड रेलवे ट्रैफिक। आप रोड ट्रैफिक से सैटेलाइट पे कम्युनिकेट करा दो। देर इज रोड ट्रैफिक, यहाँ पे कार्स हैं, आप इन कार्स को सैटेलाइट से कम्युनिकेट करा दो एंड गेट देम बैक। तो रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी, आप क्रॉप स्प्रेइंग के लिए मान लो ड्रोन यूज कर रहे हो, उस ड्रोन को आप सैटेलाइट से कम्युनिकेट करा दो। तो देर आर many applications, not just air traffic management, but currently it is being used for air traffic management. Okay, किसी भी टेक्नोलॉजी की बहुत एप्लीकेशंस होती हैं। The one that we're using now is air traffic management, but there are many ways. Okay, all right. एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसपे एमसीक्यू में गलती करने का बहुत चांस है कि चाइना एंड रशिया डू नॉट हैव दिस सिस्टम। तो जनरली जब हम सोचते हैं हमें लगता है कि चाइना एंड रशिया एंड एडवांस कंट्रीज they are doing very well in their space program, तो इनके पास तो होगा ही, but Russia and China do not have this system. Okay, this is Gagan is done. Now let's move on to the concept of space exploration. Space exploration क्या है? Space exploration तो नाम से ही पता चल रहा है, it is going beyond the earth to explore the space. Space exploration का कोई भी मिशन होता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं। मान लो ये एक प्लैनेट है, दिस इज मार्स, मुझे इसको एक्सप्लोर करना है। तो एक में क्या करूंगा, मैं मार्स के अराउंड एक ऑर्बिटर लगा दूंगा। like I will put a satellite that is orbiting Mars, जिसमें कैमरा होगा, वो मार्स की फोटोज खींच लेगा। दिस इज ऑर्बिटर। द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट्स द सेलेस्टियल बॉडी। सेकंड इज लैंडर। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं मार्स के सरफेस पे ढंग से देखूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक लैंडर लाऊंगा जो इसके यहाँ पे लैंड करा सके, जो इसके यहाँ लैंड हो सके, एंड देन आई विल यूज अ रोवर। अ रोवर इज लाइक अ कार, राइट? So rover can go and travel the area of Mars, and lander will allow the rover to land here. तो एक ऑर्बिटर that will orbit the planet, एक लैंडर जो लैंड करेगा सरफेस पे, और एक रोवर, रोवर जो सरफेस पे चलेगा। These are the three components of a space exploration mission: ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। ठीक है, लैंडर इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन अ सेलेस्टियल बॉडी। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ऐसे आराम से, जैसे एरोप्लेन लैंड होता है। And rover is a robotic device, carries instruments as payloads for scientific investigation. Scientific investigation करने के लिए we use a rover. Okay. अब ये जो है Phoenix rover, Curiosity rover, Insight rover, these are rovers used by NASA for Mars. इनके नाम है ये, and ये terms important हैं, right? इंडिया ने जो चंद्रयान 2 किया था, चंद्रयान 2 was our mission to the moon. इसमें we had one orbiter, वी हैव अ लैंडर। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम लैंडर। एंड रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान रोवर। तो दिस इज इंडियाज चंद्रयान 2 मिशन। इट हैड थ्री थिंग्स, वन ऑर्बिटर, वन लैंडर एंड वन रोवर। ये जो थे, इफ यू नो, देयर वाज अ वेरी फेमस पिक्चर वेयर डॉक्टर कस्तूरी रंगन वाज क्राइंग बिकॉज दिस वाज इंडिया ये सक्सेसफुली नहीं कर पाया था इन इट्स चंद्रयान 2 मिशन। अभी हम आगे उसको देखेंगे। ओके, ऑलराइट। स्पेस एक्सप्लोरेशन में तीन कंपोनेंट होते हैं, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। इसके अलावा हमने देखा है समथिंग कॉल्ड अ फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशन का क्या मतलब, कि जैसे ये प्लैनेट है, इट विल जस्ट, दिस स्पेसक्राफ्ट विल जस्ट फ्लाई पास्ट इट, द स्पेसक्राफ्ट विल जस्ट फ्लाई पास्ट द प्लैनेट। व्हेन इट फ्लाई पास्ट द प्लैनेट इट विल कनेक्ट सर्टेन डेटा। इसका एग्जांपल है वॉयेजर 1। वॉयेजर 1 वाज द फ्लाई बाय मिशन टू जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स आर गैस जायंट्स। ये बेसिक ज्योग्राफी है, आई होप यू नो दिस। ठीक है, तो वॉयेजर 1 टू जोवियन प्लैनेट, दिस वाज अ फ्लाई बाय मिशन। इट विल जस्ट फ्लाई पास्ट देम, ना उनको ऑर्बिट करेगा, ना वहां लैंड करेगा, ना वहां रोवर डिप्लॉय होगा, जस्ट उनके पास ऐसे निकल जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लाई बाय मिशन। एंड देयर इज अ वर्ड ग्रेविटी असिस्ट। आपको बस इस टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। ग्रेविटी असिस्ट मींस कि आपने सन या और किसी प्लैनेट की ग्रेविटी यूज करी। ग्रेविटी से क्या हो रहा था, चीजें पास आ रही थी, राइट? तो यू यूज द ग्रेविटी टू प्रोपेल। प्रोपेल मींस टू गो फॉरवर्ड, तो यूज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू प्रोपेल फॉरवर्ड, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी असिस्ट। ओके, दिस इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब इसरो ने कौन कौन से स्पेस एक्सप्लोरेशन किए? अर्थ के मून पे हमने किया चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। देन मार्स पे वी हैव डन मंगलयान 1 एंड मंगलयान 2। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हमने किया एस्ट्रोसैट, एंड सन की स्टडी के लिए हमने किया आदित्य L1। हम ये सारे देखेंगे अभी। आदित्य L1 के नाम से L1 आपको क्या पता चल रहा है? L1 इज लैग्रैंज पॉइंट 1। हमने पढ़ा था लैग्रैंज पॉइंट, ये अर्थ, ये सन, यहाँ L1, यहाँ L3, यहाँ L2। तो ये जो आदित्य L1 है, ये लैग्रैंज पॉइंट 1 पे जाएगा और सन को स्टडी करेगा।
That is clear from the name. Aditya means sun. Sun study का मिशन L1. This is our exploration mission for the sun. अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. पहला था चंद्रयान 1. Here the orbit is very very big, very big. It has enough space to accommodate everything. And जो doubts हैं, that you can put in the doubt Google form please. Okay. चंद्रयान 1 में क्या था? चंद्र इज क्लियर, इट इज मून. मून का स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन था. द ओनली थिंग देयर वाज ऑर्बिटर, ओनली ऑर्बिटर. एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट हैज स्टॉप्ड बिकॉज द बैटरी रैन आउट एंड द सोलर पैनल्स डिड नॉट वर्क प्रॉपर्ली. तो एंड किसी भी स्पेस मिशन की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, राइट? देयर इज अ लाइफ फॉर एवरी स्पेस मिशन. बियॉन्ड दैट वो नहीं चलता. ओके, तो इसकी लाइफ खत्म हो गई थी. द बैटरी इश्यूज मेड इट स्टॉप. It found loss of water on the surface of moon. What is loss of water? Loss of water means ये proof कि पहले मून पे पानी था और अब नहीं है. So there is loss of water on the surface of the moon. It found the landing site of the Apollo mission. जो Apollo mission था नासा का, that went to the moon, वो कहाँ लैंड किया था वो इसने ढूंढ लिया. And it carried instruments from multiple countries. Now this is just static information. You just have to read this. ठीक है, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है. Then there was Chandrayaan 2. चंद्रयान 2 was एक ऑर्बिट, एक लैंडर, एक रोवर. लैंडर was विक्रम लैंडर. दिस was named after which scientist? ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ, राइट? एंड रोवर was called प्रज्ञान रोवर. ओके, so there was assistance from Russia and France. ऑर्बिटर was very successful. ऑर्बिटर अभी भी है वहां पे, राइट? बट द लैंडर एंड रोवर नहीं पहुंच पाए टू द सर्फेस ऑफ द मून. ओके, अब हम क्यों कर रहे हैं स्टडी ऑफ द मून? हम उसका टेरेन देख रहे हैं, हम उसकी सॉइल की स्टडी कर रहे हैं, हम उसकी एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, हम वाटर देख रहे हैं. एंड इस तरह पे जनरली इन चीजों पे वैसे ही क्वेश्चन नहीं आता, बट आई बी तो थिंक ब्रॉड. वी आर ट्राइंग टू स्टडी एवरीथिंग पॉसिबल, राइट? तो दिस इज द स्टडी ऑफ द मून. नाउ अब चंद्रयान 2 मिशन. चंद्रयान 2 वाज द वन दैट हैड एन ऑर्बिटर, दैट हैड अ लैंडर, दैट हैड अ रोवर. द लैंडर एंड रोवर डिड नॉट रीच मून. ऑर्बिटर पहुंच गया. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. इसमें हमने कौन सा, व्हाट वाज द लॉन्च व्हीकल यूज्ड? वी यूज्ड GSLV Mark 3. GSLV Mark 3 ये हम पढ़ चुके हैं कल. क्या होता है GSLV Mark 3, राइट? जुलाई 22 2019 पे ये लॉन्च किया गया था. इट पुट इनटू एन ऑर्बिट जिसका पेरिजी वाज दिस मच, बहुत क्लोज टू द अर्थ, बट द एपोजी वाज दिस मच. तो ये क्या हुआ? जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. ये यूज किया गया फॉर चंद्रयान 2 मिशन. द कैरियर वाज GSLV Mark 3. ओके, now it had an orbiter, a lander and a rover. Lunar scientific knowledge, topography, seismography ये सब समझने के लिए ये था. Origin of moon, evolution of moon, उसके लिए this was made. Okay, now there was a translunar insertion. इसका क्या मतलब है? lunar space में, मतलब मून में we were trying to insert the lander and the rover. translunar insertion maneuver था जिसमें हमें लैंडर और रोवर को लाना था. तो विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान ओवर ये होता रहा, बट एट 2.1 किलोमीटर, जब सिर्फ 2.1 किलोमीटर रह गए थे टू द मून सरफेस, इसका कॉन्टैक्ट हमारे से खत्म हो गया एंड द मिशन फेल्ड. सो वी वर जस्ट एबल टू गेट द ऑर्बिटर. वी वर नॉट एबल टू गेट व्हाट? वी वर नॉट एबल टू गेट द लैंडर. वी वर नॉट एबल टू गेट द रोवर. ओके, बिकॉज जब वो 2.1 किलोमीटर अबव था देन द सरफेस ऑफ द मून, देन इट स्टॉप्ड. हमसे कम्युनिकेट करना उसने बंद कर दिया. देयर वाज सम फेलियर. नाउ अब इसका फायदा क्या है? मून की एवोल्यूशन कराएगा. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन मून्स पोलर रीजन. दीज आर अगेन स्टैटिक इंफॉर्मेशन. द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज, ये जो अभी ऑर्बिटर है हमारा चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, द पार्ट दैट वाज सक्सेसफुल, दिस हैज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन कैमरा ऑफ एनी लूनर मिशन सो फार. ठीक है, वर्ल्ड में किसी भी लूनर मिशन का ऐसा कैमरा नहीं है जैसा इसका है, राइट? इट हैज अ रेजोल्यूशन ऑफ 0.3 मीटर्स. मतलब 0.3 मीटर दूर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उनको डिफरेंशिएट कर देगा. तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंद्रयान 2 में. एंड दैट इज व्हाई even the lander and rover failed. Even then the mission was successful because of the camera that was there on the orbiter. That is the highest resolution camera ever in any lunar mission. Okay, अब हम क्या कर रहे हैं? We are doing Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 में क्या है? It will only have a lander and a rover. Orbiter तो हम पहुंचा चुके. Now we are trying to get the lander and the rover. राइट, एंड कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं हम? साउथ पोल ऑफ मून पे.
यहाँ पे अभी तक कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन हुई नहीं है. सो वी आर ट्राइंग टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून, which is the least explored region of the moon through Chandrayaan 3. Obviously, it does not carry an orbiter because orbiter तो हम already लगा चुके. It has only lander and rover. Okay. Countries with lunar missions: NASA का Apollo mission, Russia का Luna, China का Chang'e, and there are many countries, right, that have lunar missions. इसकी एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा of the missions that you have to remember. I'll upload it. That is just a list. वो आपको बस ये याद करना है कि इस mission you just have to remember three things: name of the mission, name of the country, and the name of the planet or any body. बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना. ये तीन चीजों की I'll make a list and send to you. Okay, all right. अब बात करते हैं मंगलयान. मंगलयान is Mars orbiter mission. Mars orbiter mission is India's orbiter around Mars. नाम से ही क्लियर है. This was the first mission we sent to Mars. ठीक है, it was India's first interplanetary exploration mission. मतलब beyond the normal planet, मतलब जो planet, just a second, I'm just hold on. Very good. तो Mars जो है, Mars पे we were sending a mission. तो we were sending the first mission beyond Earth. That was the interplanetary exploration mission. ठीक है, इसके क्या वो थे? Technology demonstration and scientific objective. These were the two objectives: tech demonstration and scientific objective. राइट. टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में क्या था कि हम दिखा सकते थे कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है ताकि इसरो को कमर्शियल बिजनेस अगर कभी मिलना हो तो वी कैन गेट इट. एंड साइंटिफिक तो डेटा कलेक्शन था ही. अभी क्या हुआ है कि आफ्टर 8 इयर्स ये जो ऑर्बिटर था जो हमने मार्स के अराउंड लगाया था वही इसकी एंड ऑफ लाइफ हो गई है और अब इसकी कम्युनिकेशन बंद हो गई है फ्रॉम इसरो. ओके, इसको यूज किया था PSLV C-25. अब इसको कैसे यूज कर लिया मार्स तक पहुंचने के लिए? मार्स तो बहुत दूर है, तो वी यूज द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. ये हमने देख लिया था. इट मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन कंट्री एंड द फोर्थ इन द वर्ल्ड टू गेट टू द प्लैनेट. फर्स्ट एशियन, फोर्थ इन द वर्ल्ड. ओके, ये चीजें इंपॉर्टेंट है. नॉट फर्स्ट इन द वर्ल्ड. कौन कौन सी पहुंची थी हमसे पहले? रशिया, US एंड EU. ठीक है, एंड फर्स्ट एशियन कंट्री, फोर्थ इन द वर्ल्ड. राइट. इसमें 5 पेलोड थे. वो कौन से हैं 5 पेलोड वो हम अभी देखते हैं. लाइक मार्स ऑर्बिटर मिशन हैड 5 थिंग्स. वो क्या है 5 वो हम देखते हैं. एंड इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, द इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क यूज्ड टू ट्रैक दिस मार्स ऑर्बिटर मिशन. अब तो कम्युनिकेशन खत्म हो गई बट पहले इट वाज बीइंग ट्रैक्ड बाय द इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क. अगेन बिल्कुल थियोरेटिकल याद करने की चीजें. नाउ इट हैड 5 थिंग्स. फर्स्ट थिंग इट हैड वाज मार्स कलर कैमरा. 5 पेलोड थे इन द मार्स ऑर्बिटर मिशन 1, है ना. तो मार्स सरफेस पे फोटो लेगा ये, कलर कैमरा नाम से क्लियर है. देन देयर इज लाइमन अल्फा फोटोमीटर. ये क्या होता है ये हम अभी बात करेंगे. आई विल जस्ट टेल यू आफ्टर आई हैव टोल्ड यू द रेस्ट. देन देयर इज थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर. मतलब ये क्या देखेगा? ये इंफ्रारेड रेडिएशन चेक करेगा. नाम से क्लियर है. एंड नाउ यू नो व्हाट इंफ्रारेड इज. देन देयर इज मेनका. मेनका स्टैंड्स फॉर मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कॉम्पोजिशन एनालाइजर. मतलब एक्सोस्फीयर इज द आउटसाइड ऑफ द मार्शियन एटमॉस्फेयर. तो ये मार्शियन एटमॉस्फेयर को देखेगा. मार्शियन एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं. मेनका. एंड मीथेन सेंसर, दिस विल सेंस द मीथेन ऑन मार्स. एंड इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ मीथेन, मीथेन इज CH4. मीथेन गैस इज जनरली प्रोड्यूस्ड by living things. So this can probably give us proof कि whether some life is there on Mars or not. So there is a color camera one that will take pictures. Lyman alpha photometer अभी देखते हैं. Thermal infrared imaging spectrometer, infrared देखेगा. Menka exosphere देखेगा. And methane sensor. Right? Clear? Okay, ये 5 चीजें हैं. Now there is Lyman alpha photometer. ये क्या होता है? ठीक है. हाइड्रोजन एटम में हमने क्या देखा था कि ऐसे बैंड्स बनते थे, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता था फिर नीचे आता था. राइट, दिस वी हैव सीन एट द टाइम ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. तो हाइड्रोजन एटम में जो ट्रांजिशंस होती हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना, इलेक्ट्रॉन नीचे आना, इसे कहते हैं ट्रांजिशन. इसमें जो सीरीज के नाम है दैट इज लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्चन, ब्रैकेट. क्या है ये? डोंट नीड टू रिमेंबर. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट लाइमन सीरीज इज कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. जो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो रहे थे जो हमने देखा था, उस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन में देयर इज द लाइमन सीरीज. तो लाइमन अल्फा फोटोमीटर क्या करेगा?
वो डिटेक्ट करेगा कि हाइड्रोजन वहां पे कितना है। डज मार्स हैव हाइड्रोजन, डज इट हैव ड्यूटीरियम, डज इट हैव ट्रीटियम। अभी ड्यूटीरियम और ट्रीटियम क्या होता है ये हम तब पढ़ेंगे व्हेन वी रीड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अभी के लिए यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट लाइमन अल्फा फोटोमीटर इज मेंट फॉर सीइंग हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देख भी लो, ड्यूटीरियम एंड हाइड्रोजन। ड्यूटीरियम इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। कैसे बनता है ड्यूटीरियम, क्या होता है, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे देन वील रीड। So this will answer question about water presence on Mars, because if you can map hydrogen and you can map oxygen, then you can estimate कि कभी water यहाँ पे था या नहीं, because water is what, H2O. So these are the 5 components and Lyman alpha photometer is connected with hydrogen. अभी के लिए इतना हम याद कर रहे हैं. Okay. Now what are the technological achievements? Mars orbital mission ने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या हमें पता करके दिया, राइट? पहला इसने मार्शियन एक्सोस्फीयर, हमने देखा था वो एक्सोस्फीयर को देख रहा था, तो वहां पे उसने आर्गन 40 एटम्स निकाले। आर्गन इज अ गैस, इट इज अ गैस दैट इज प्रेजेंट इन द मार्स एटमॉस्फेयर। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट्स कि इसने मार्शियन एक्सोस्फीयर में, वी हैड अ मेंका एक्सोस्फीयर न्यूट्रल कॉम्पोजिशन एनालाइजर, उसने एक्सोस्फीयर में बताया कि देयर इज अ आर्गन गैस। देन इट इज फोटोग्राफ्ड, इट फोटोग्राफ्ड the far side of Deimos. Mars has 2 moons, Phobos and Deimos. These are the 2 moons of Mars. तो Phobos की फोटो ली है किसने, मार्स ऑर्बिटर मिशन ने। किससे ली होगी, मार्स कलर कैमरा से ली होगी। एंड देन इट चेक द टाइम वेरिएशन इन द पोलर आइस कैप्स, मतलब मार्स के पोल्स पे ओवर टाइम आइस की कितनी वेरिएशन हुई है, ये चीज इसने ट्रैक करी। तो दीज वर इट्स टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स। पेलोड्स देख लिए, कैसे भेजा था ये देख लिया, क्या क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट से पता चल गया, और इसने क्या अचीव किया ये हमें पता चल गया, राइट? अदर मार्स मिशंस जो आपको याद करने, ऐसी मैं एक लिस्ट आपको बाकियों के लिए भी बना के दे दूंगा। परसिवरेंस इज ऑफ नासा ऑफ यूएसए, होप इज यूएई, तियानवेन 1 इज ऑफ चाइना, एंड मार्स मून्स एक्सप्लोरेशन मिशन इज ऑफ जापान। I'll make a list like this for all the missions that you have to remember. Okay, this is just again static information, nothing to explain, right? अभी हम perseverance rover हमने देखा था यहाँ पे। perseverance क्या है, it is a rover. rover means it drives on the surface of Mars, right? it is part of Mars exploration program of NASA. ठीक है, इसने अभी क्या किया है, इसने मार्स से एक रॉक सैंपल उठाया है। मार्स से एक रॉक सैंपल उठाया क्योंकि हम मार्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हमने यूज करी है टाइटेनियम ट्यूब। अगेन दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट एन आइडिया ले लो कि क्या चल रहा है। इतना डिटेल में या डेप्थ में क्वेश्चन आना बहुत अनलाइकली है। इट यूज्ड अ टाइटेनियम ट्यूब टू टेक अ रॉक सैंपल फ्रॉम मार्स, राइट? नाउ दिस रॉक सैंपल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द जिजेरो क्रेटर। मार्स में एक क्रेटर है जिसका नाम है जिजेरो, वहां से इट हैज टेकन द रॉक सैंपल इन अ टाइटेनियम ट्यूब। इस क्रेटर का दूसरा नाम है साउथ सेटाया। तो मार्स के सरफेस पे देयर इज अ क्रेटर called Jezero और साउथ सेटाया, यहां से इसने it has taken certain rocks using a titanium tube. Okay, अब इसमें स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात ये है कि it is not bringing all the rocks back. ये मार्स पे एक डेपो बना रहा है। मार्स पे क्या कर रहे हैं, they are making a sample depot called the 3 forks. ये टर्म इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने मार्स के क्रेटर से रॉक निकाला, कुछ रॉक ही वांट टू सेंड बैक टू अर्थ फॉर एनालिसिस, बट कुछ दे आर स्टोरिंग ऑन मार्स। क्यों, कि भाई मान लो ये मिशन अर्थ तक वापस पहुंचने का फेल हो जाए, देन व्हाट वी विल नीड कि दोबारा हमें यहाँ जाके निकालना ना पड़े। तो दे हैव क्रिएटेड अ डेपो कॉल्ड द 3 forks ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। इट विल सर्व एज बैकअप इफ परसिवरेंस कांट डिलीवर इट्स सैंपल्स। तो सब्सिक्वेंट नासा मिशन, जो नेक्स्ट नासा का मिशन होगा, वो डिलीवर कर देगा। ओके, इसने क्या, इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं एक्सेप्ट फॉर टेकिंग दैट सॉइल सैंपल? व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द परसिवरेंस रोवर? इट हैज कैप्चर्ड द सोलर एक्लिप्स ऑन मार्स यूजिंग द फोबॉस मून। अब सोलर एक्लिप्स कैसा होता है, दिस इज बेसिक ज्योग्राफी, सो आई होप यू नो इट, राइट? एक मून डीमोस था जिसकी फोटो ली थी इंडिया के मिशन ने, इन्होंने सोलर एक्लिप्स देखा यूजिंग द अदर मून फोबॉस। ओके, एंड इसके साथ वी हैव आल्सो सेंट अ मॉक्सी। मॉक्सी इज ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आइडिया ले लो, ऑक्स लिखा है बीच में तो यू कैन रिमेंबर ऑक्सीजन। तो ये चेक कर रहा है कि कोई ऑक्सीजन है मार्स पे
और अगर नहीं है तो इट इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, कि मान लो हमें कभी मार्स पे रहना पड़ा, इन केस वी वांट टू स्टे ऑन मार्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, so we will need oxygen. So this MOXIE, built by the Massachusetts Institute of Technology, is making oxygen on the surface of Mars, right? The Perseverance rover, Mars mission, NASA का, this is clear. Okay. Now Mars में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? We study the surface, we study the atmosphere, we study the methane, we study the presence of water, and we have the NASA Deep Space Network. The Deep Space Network also, जैसे इंडिया का डीप स्पेस नेटवर्क था, वैसे नासा का भी डीप स्पेस नेटवर्क है, राइट? सिमिलर फंक्शन. ओके. नाउ वी यूज्ड PSLV C11 फॉर चंद्रयान 1, C25 फॉर मंगलयान 1. 25 था because it was the 25th mission, it is called the Silver Jubilee, and for मंगलयान 2 we used the GSLV. ये बस you have to remember कि चंद्रयान 1 पे PSLV C was used, मंगलयान पे PSLV C25, and Mangalyaan 2 पे GSLV was used. Just the names are important. Okay. All right. Now let's come to AstroSat. AstroSat is astronomical satellite. Astronomical satellite का क्या मतलब है? It measures from the astronomy is the study of space. So from the space, the radiations that are coming, उनको ये measure करता है. कौन कौन सी radiation को ये measure करता है? It measures visible radiation, X-ray radiation, and UV rays. Stars in space, like our sun also, it emits the entire electromagnetic spectrum. Okay, so now it's very difficult to make one satellite that can see all the spectrum. So we have made an astrosat. It sees the visible light, X-rays and UV rays. Okay, so the visible, higher energy than that UV, higher energy than that X-ray, ये करता है, and it is put in 650 kilometer orbit. Okay, now इसके क्या objectives हैं? It has to study the high energy events of universe. Now this of course you don't have to remember. Why? Because if it is seeing X-rays, if it is seeing UV rays, of course it is seeing what? It is seeing high energy events. ठीक है? Binary system study of quasar and pulsar. What are these things? I expect that in geography you would have read this. Just go back and read. But if you यहाँ पे you just need to remember that it's studying stars called quasars and pulsars. Okay, क्या होते हैं मैं आगे आपको बता दूंगा. ब्लैक होल मैपिंग के लिए इसे यूज किया जाता है. नाउ NASA has some other observatory called Chandra X-ray Observatory. Okay, and this is also named after an Indian scientist. ये आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताओ, जब हम रोल ऑफ साइंटिस्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा. टू मैप फॉर ब्लैक होल्स, राइट? तो एक्सरे ऑब्जर्वेटरी यूज की जा रही है बाय नासा कॉल्ड चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी टू मैप फॉर ब्लैक होल्स. नाउ देयर आर मेनी अदर कंट्रीज दैट हैव एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट. Japan has one, Europe has one, and many other countries have one too. ये चीजें वो पूछते हैं. So that is why I have mentioned it specifically. Okay. Now what are its objectives? It is a dedicated multi-wavelength space observatory. Multi-wavelength क्यों? X-ray, UV ray, visible. ठीक है? And it can simultaneously see multi-wavelength observation of astronomical objects with a single satellite. एक satellite multi-wavelength observatory है, right? क्या देखता है ये? ऑप्टिकल, यूवी, एक्सरे रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट? नाउ इट्स मास वाज दिस मच. ठीक है, 650 किलोमीटर ऑर्बिट में इसको डाला गया. एंड दिस वाज द PSLV C30 was the use of the launch vehicle. It has 2 solar panels. Why? To get energy. And there is a telemetry tracking and command network at Bangalore, and spacecraft control center and mission operation complex of ISRO. ये वो जगह है जहां पे ये कंट्रोल हो रहा है, जहां इसको देखा जा रहा है, राइट? सो वी हैव सीन इसका वेट, ये 650 kg में था. PSLV C30, 2 सोलर पैनल्स, एंड इसको कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है? ओके, 5 इसके साइंटिफिक पेलोड्स हैं, राइट? वो ग्राउंड स्टेशन पे आते हैं, right? There are 5 payloads. It sees the ground station, and then the data is then processed
डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर एट बैंगलोर। अगेन स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, एक बार रीड कर लेना, सब कुछ तो देखो याद नहीं होगा, वी कैन जस्ट सी, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए अपने को, राइट। आई विल नॉट एक्सपेक्ट दैट यू मग अप एवरीथिंग ऑल्सो, राइट। नाउ व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स? हाई एनर्जी प्रोसेस, ये तो हमें समझ आ गया। मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स, व्हाट आर न्यूट्रॉन स्टार्स, वील सी। स्टडी स्टार बर्थ, हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड। X-ray sources, this also we have understood. And deep field survey of the universe in UV region, ये भी हमें समझ आ रहा है, because it sees UV, it sees X-ray and it sees visible, right? तो ये एस्ट्रोसैट की स्टडी है, इसके 5 पेलोड है, राइट। 5 पेलोड्स आर देयर। फर्स्ट इज, जो हाईलाइट किया बस उतना ही याद करना, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, लार्ज एरिया एक्स-रे प्रोपोर्शनल काउंटर। देखो यूवी, ये यू विल ऑलवेज रिमेंबर, आपको दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इट सीज यूवी, इट सीज एक्सरे एंड इट सीज विजिबल। तो अगर आपको बोला जाए कि इसमें एक यूवी इमेजिंग टेलीस्कोप है तो हाँ होगा, अगर इसमें एक एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर है तो हाँ होगा, राइट। अगर इसमें एक एक्सरे टेलीस्कोप है तो इट विल बी देयर, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये भूलोगे आप। कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर, ये भी इसमें एक पेलोड है, कैसे काम करता है ये क्या है इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इट्स देयर इन द एस्ट्रोसैट। नाउ CZTI, ओके, ये भी एक्सरे देखने के लिए है, certain range of X-ray, but this you need to remember because this you will forget in the exam, okay. And then sky scanning monitor, again for X-ray sources, again visible, UV, X-ray, 5 payloads, उसमें 2 ही याद करने लायक हैं, CZTI and sky scanning monitor, because बाकी में तो UV या X-ray लिखा ही हुआ है। Then it has something called, it is launched at 650 किलोमीटर, इसका mass is about 1500 kg, ये हमें पता है, and India is not the only country to have it, many countries have it. This is all that you need to remember about astrosat. I have written everything if you just want to read it, but जो आपको याद करना है वो इतना ही है, okay. This is what it looks like, it has solar panels and ये इसके payloads हैं, this is the photo of the astrosat, okay. Now we'll see Gaganyaan. Gaganyaan is ISRO's proposed manned mission to space, means we are trying to send scientists into space. It has an orbital module, something like this, that will orbit the earth. It orbital module में 2 चीजें हैं गगनयान में, there is the crew module which will carry the crew and the service module, right. Now crew module में, as you can probably guess, the astronaut will be there, okay. So this is the crew module, it is a double walled system, it is a habitat of astronauts. Now it has a thermal protection system, अगर जब ये ऊपर जाएगा, when it goes up like this, there will be heating because of atmospheric friction, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए the crew module has a thermal protection system. नॉर्मल सी बात है, हीट से हमें एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करना है if we have to put them in outer space, okay. Orbital module will be launched by human rated GSLV Mark III. Human rated means which is capable of carrying humans. Human rated GSLV Mark III vehicle will carry the orbital module. It will be smaller in size than the current manned missions of Soyuz. Soyuz is a Russian capsule, Chinese Shenzhou and NASA's Orion. Orion हम अभी देखेंगे आगे, Artemis 1 and Orion spacecraft क्या है, but it is smaller than them. This is one thing you have to remember. Then Gaganyaan is a manned mission, this you have to remember. It has 2 parts, crew module and service module. Crew module का काम क्या है? It is to carry the crew, and it has a thermal protection system to protect the crew from any heating that happens. This is what it is going to look like. GSLV Mark III will take it off. It will reach the low Earth orbit. Then the orbital module has 2 things, crew module and service module. It will spend 5 to 7 days in space. After that, the crew module will then come back to Earth. Okay, service module will stay there. It will start like this, go around the Earth, come back here. So start from India, come back to India. Oh sorry, it will start from here. This is Sriharikota. It will start from here, orbit the Earth and come back here. Okay, and crew module recovery will happen in 15 to 20 minutes. Okay, देखो, orbital module has a crew module and a service module. Service module is for doing experiments. Crew module is for carrying the crew. What are we using? A GSLV Mark III. It has 2 S200, this we have read.
one liquid 110 and one cryogenic engine. This is all you need to remember about Gaganyaan. Okay, manned mission भी याद रहेगा तो भी काम चलेगा. वैसे भी this is last year's current affairs. Even if you don't remember, it will be fine. Now, SSLV. SSLV is small satellite launch vehicle. It is meant for launching nano satellites and micro satellites to space. Right. Now, किसने करा है ये? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, अंतरिक्ष, इन स्पेस, इंडियन स्पेस एसोसिएशन. इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है. सो आफ्टर दिस स्लाइड वो चारों को हम प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर देंगे. बट अभी के लिए यू रिमेंबर दैट SSLV लॉन्च, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. एक PSLV हमने पढ़ा है, एक GSLV हमें पता है. GSLV में देयर इज GSLV Mark 2, देयर इज GSLV Mark 3, and the other launch module that we have is called small satellite launch vehicle, right? And who is running this small satellite launch vehicle? New Space India Limited, right? It will be the agency that is responsible for this, right? Now, why are we doing this? क्यों हमने न्यू स्पेस ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्यों स्टार्ट किया? पहले तो इसके थोड़े कैरेक्टर्स देखो. दिस इज अ ऑल सॉलिड व्हीकल. तीनों इसमें सॉलिड इंजन, मतलब जो हमने देखा था सॉलिड लिक्विड इन केस ऑफ PSLV, यहाँ पे देयर इज ऑल सॉलिड. 3 स्टेज है बट तीनों ही सॉलिड है, राइट? ये क्या है? लॉन्च ऑन डिमांड. मान लो कोई फॉरेन कंट्री कहती है कि मुझे सैटेलाइट लॉन्च करानी है. इट इज अ स्मॉल सैटेलाइट, नैनो और माइक्रो सैटेलाइट. देन वी विल यूज दिस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट? देन इट हैज अ वेरी रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम. मतलब सिर्फ 72 आवर्स, ओनली इन 3 days वी कैन बी रेडी विद द लॉन्च. अगर हम अभी PSLV GSLV देखें तो इट टेक्स 70 days. So if Brazil tells us that 70 days are needed, Brazil tells us that you launch a satellite for us, it will take us 70 days to make the GSLV and get everything together. But this can be done in merely 3 days. Okay, it has multiple satellite mounting options, nano, micro and small satellites, and it's cost effective. Nano, micro and small satellites क्या होती हैं? वेट के बेसिस पे. अगर कम वेट होगा, क्लासिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. Cost effective, it will be only rupees 30 crore. So it will help in our commercial operations. And because it is mainly meant for commercial operations, the agency that is responsible for seeing it is New Space India Limited. ये क्या है हम देखते हैं. It can launch a 500 kg satellite. इसका maximum weight यही है, because only nano, micro and small satellites. So maximum 500 kg satellite and maximum till 500 kilometer low Earth orbit. तो छोटी सैटेलाइट्स LEO में डालने के लिए देयर इज स्मॉल स्पेस लॉन्च व्हीकल, राइट? दिस इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सॉरी. So this is what we are doing for commercial orders. All right. Now New Space India Limited, in space, अंतरिक्ष, ISRO, इसमें कंफ्यूजन होती है तो ये मैं आपको बता देता हूँ. Under the Prime Minister directly there is the Department of Space. The Department of Space has in space, ISRO, अंतरिक्ष, NSIL. ISRO के नीचे there is the ISRO Council and there is the R&D and educational establishments. अब इन स्पेस क्या है, अंतरिक्ष क्या है, NSIL क्या है, ये देखते हैं. पहले है अंतरिक्ष. अंतरिक्ष एक PSU है. इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, राइट? It was incorporated as a private limited company owned by Government of India in September 1992. All right. ये क्या है basically? It is the marketing arm of ISRO for promotion and commercial exploration of space products. Promotion and commercial exploitation of space products. So ISRO की marketing के बाहर की countries हमें ISRO को orders दे, right? This is the role of अंतरिक्ष. Commercial and marketing arm of ISRO. It is engaged in providing space products and services to international customers. तो यहाँ पे अंतरिक्ष क्या हुआ? अंतरिक्ष is the marketing arm of which? ISRO. ISRO तो आपको पता है, right? Now other thing is New Space India Limited. This was founded in 2019 again by Department of Space to bridge the gap between ISRO and private sector and transfer of ISRO technology to industry. ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि NSIL, इंडियन इंडस्ट्री जो है उसको ग्रो करे इन टर्म्स ऑफ स्पेस. ओके, इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करे इन टर्म्स ऑफ स्पेस. उससे क्या होगा? वी विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अब्रॉड, वी विल गेट ऑर्डर्स, राइट? एंड इंडियन इंडस्ट्री विल गेट द ऑर्डर.
So we will free up ISRO for doing more strategic tasks or more difficult missions. अब ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में डालना, it is a very low level mission for ISRO to do. ओके, तो हम चाह रहे हैं कि इंडियन इंडस्ट्री को इतना बूस्ट मिल जाए, दैट NSIL डज दैट, कि इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट मिल जाए, तो ISRO गेट्स फ्रीड अप. इट इज अ होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. वो हमने देख ही लिया, यहाँ पे ये डायग्राम है, यू कैन सी इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. देन इट इज नॉट रिप्लेसिंग अंतरिक्ष, ये भी हमने देख लिया एज मार्केटिंग आर्म ऑफ ISRO. NSIL is not replacing अंतरिक्ष, but NSIL also does commercial order भी लेता है NSIL. So there is some overlap. There is overlap, but अंतरिक्ष is not replaced, right? So NSIL का काम क्या है? Indian industry को boost करना in terms of space. All right, and it is a government of India company under Department of Space. It is not replacing अंतरिक्ष. It is a PSU under Department of Space. अंतरिक्ष will handle ISRO's commercial deals for satellite with foreign customers. अंतरिक्ष क्या करेगा? बाहर की कंट्रीज के साथ their commercial deals of ISRO it will monitor. Then NSIL will capacity building of local industry for space manufacturing. ये बात भी समझ आ गई कि local industry grow करे, right? Okay. What is the vision of NSIL? कि our industry starts building launch vehicle, provides launch services, so ISRO can be freed up for more essential tasks. Okay. Now, space related products and services ये देगा to global customers, right? And it will, आपको बताया था there is some overlap, right? This is the overlap between अंतरिक्ष and NSIL. It does give some services to global customers, and it spurs the growth of Indian industry in undertaking technologically challenging space related activities. The Indian industry करने लगे ये satellite launch, the industry starts growing, it does these satellite launches, small satellite launch vehicle ये industry करे. ISRO does the more difficult task of going for interplanetary missions. This is something similar to what NASA is doing. NASA is now relying on SpaceX for ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्ट्रोनॉट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. जो ये मीनियल काम है, नासा कह रहा है स्पेसएक्स को करने दो, हमें फोकस करने दो मोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पे. तो सिमिलर आइडिया इज देयर इन इंडिया. ओके, नाउ NSIL's मेन पर्पस, market technologies developed by ISRO, right? And it was already being performed by Antariksh Corporation. So there is some overlap, but main NSIL function is industry. Antariksh is commercial marketing arm. Okay, ये you can read this. This is just basic idea PIB से लिया है about the New Space India Limited, right? Now there is a third body called Indian National Space Promotion and Authorization Center. वापस जाते हैं उस टेबल पे and देखते हैं. So we saw that there is an InSpace, there is an ISRO, अंतरिक्ष and NSIL, right? ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया. There is some overlap, बट मेन काम NSIL का इंडस्ट्री है और अंतरिक्ष का क्या है? कमर्शियल मार्केटिंग, राइट? देन देयर इज इन स्पेस. अब व्हाट डज इन स्पेस डू, ये देखते हैं. तो इन स्पेस क्या है? इट इज अ सिंगल विंडो नोडल एजेंसी अंडर अगेन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, वो तो टेबल में दिख ही रहा है, फॉर ऑल स्पेस सेक्टर एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, राइट? बूमिंग द प्राइवेट स्पेस सेक्टर इकोनॉमी, राइट? प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस में घुसे. दिस इज द जॉब ऑफ InSpace. InSpace के 4 फंक्शन है मेनली. It has to promote space development in the private sector, enable private entities to accomplish their space ventures, authorize private entities, right, and supervise them. ये 4 मेन फंक्शन है ऑफ InSpace. This is again taken from a government document. Okay. InSpace में क्या है? Again, autonomous nodal agency against under Department of Space. This we know. It has a chairman, it has technical experts, etc. This you can read. Sharing of space infrastructure under control of ISRO. किसके साथ शेयर करेगा? प्राइवेट सेक्टर के साथ. जो इसरो ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर करेगा. टेम्पररी फैसिलिटीज विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ ISRO and new space infrastructure and facilities. This is its mandate, and in the context of the mandate, इसका decision shall be final and binding. This is what you are likely to forget. So this is important. Okay. So this is InSpace, right? InSpace के main जो 3 function है, they can be summed up in these 3 words. Interface, it is the interface between ISRO and non-governmental entities. Assess,
इट असेट्स द नीड एंड डिमांड ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, कि उनको क्या नीड्स हैं और इसरो उनको कैसे हेल्प कर सकता है। एंड एक्सेसिबिलिटी, जो इसरो ने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, दैट शुड बी एक्सेसिबल टू द प्राइवेट सेक्टर एट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ये नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम। तो अब अगर वी हैव टू सी द डिफरेंस, अगेन आई एम राइटिंग हियर, अंतरिक्ष इसरोज कमर्शियल डील्स, NSIL कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल इंडस्ट्री, कि लोकल इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़े, राइट। NSIL का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम, एंड इन स्पेस क्या है, प्राइवेट सेक्टर को ऑथराइज करना, एनेबल करना, राइट। आई नो दिस इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग, तो अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू कम, but this is how it is, and multiplicity of agencies is very common in India, right? And NSIL is also doing commercial deals, so there is some overlap with Antriksh, but Antriksh is not replaced. Understood? Okay, what is the vision? ISRO focus करे R&D पे, strategic use of space पे, NSIL करे industry को बढ़ाए, commercial deals करे in the future, and in space private sector को एक level playing field दे ताकि वो participate कर सके. Alright, these are the three bodies and their visions. Okay, now there is an Indian Space Association. The Indian Space Association is an industry body. It's not a government body. Industry में जो space के stakeholders हैं, ये उनकी body है, and it will act as single window agency for opening the space sector to startups. इसका काम is similar to InSpace, but it is not a government body. It is an industry body. So it is an association of all the startups, all the people who want to enter the space sector. Okay, all right. Currently क्या सिस्टम है कि जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है वो 360 बिलियन है, बट इंडिया अकाउंट्स फॉर मेयरली 2%. ओके, इंडिया अकाउंट्स फॉर मेयरली 2%, so we have to increase our share. And the global space market, the rocket and satellite launch services जो हम करते रहते हैं, ये सिर्फ 5% है. जो मेन चीज है वो है सैटेलाइट से आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज 95%, एंड वी हैव टू एक्सपैंड देयर. दैट इज व्हाई दीज बॉडीज लाइक इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इन स्पेस, NSIL एक्सेट्रा आर मेड, ताकि ग्रोथ हो सके इन दीज सेक्टर्स. Okay, now what are some recent initiatives that have been, these are just reforms that in Indian Space Association is trying to do. Just read them, nahi hai important, you can skip them also. Now sorry, तो अब क्या क्या कोई recent initiatives हैं जो लिए गए हैं by the private sector in the field of space. तो हैदराबाद में ध्रुव स्पेस है, एंड बेंगलुरु में देयर इज दिगंतरा. दे हैव बीन ऑथराइज्ड बाय इनस्पेस, बिकॉज हमने देखा था ऑथराइजेशन वाज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इनस्पेस टू लॉन्च पेलोड्स. ये क्या है, देखो प्राइवेट सेक्टर की बॉडीज हैं, इनको ऑथराइजेशन मिली है फ्रॉम इनस्पेस टू लॉन्च पेलोड्स ऑन द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल. ये हमने कल देखा था पोएम, राइट. देन देयर इज मिशन प्रारंभ. मिशन प्रारंभ क्या है, वी हैव लॉन्च्ड अ विक्रम S, which is a privately built rocket by this agency, Skyroot Aerospace, right? And single stage spin stabilized solid propellant. What spin stabilized means is not important for you, but what is important is that it is one stage and it has a solid fuel. तो obviously कोई बहुत ज्यादा दूर तो ये जाएगा नहीं, right? तो देखो पेलोड कैपेसिटी इसकी कमी है, right? And ISRO and InSpace are supporting this. तो InSpace का काम है प्राइवेट सेक्टर को ऑथराइज करना, राइट. देन NSIL का काम है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करे मोर स्पेस थिंग्स, एंड अंतरिक्ष का काम है कमर्शियल डील्स फॉर ISRO. ओके, देन सम अदर इनिशिएटिव्स. फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड वाज इनिशिएटेड एट श्रीहरिकोटा एंड इट वाज डिजाइन्ड बाय अग्निकुल, व्हिच इज अ स्टार्टअप इन सपोर्ट ऑफ ISRO एंड InSpace. Again, and it is built for liquid stage controlled launches. Liquid, you know what it is? So it is a launch pad meant for liquid stage rockets. बस इनका basic याद है. It's very difficult that these things are asked, right? But they have to be covered, so just read them once. Now let's come to the next thing, space tourism. Now let's go to space tourism. Space tourism क्या है? It is basically space travel. Tourism जो हम करते हैं या तो recreational होता है या leisure या business. इन पर्पसेस के लिए अगर हम ट्रैवल करें या टूरिज्म करें स्पेस में, दैट इज स्पेस टूरिज्म. अभी तक जिसके दो टाइप्स होते हैं, देयर इज ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म एंड देयर इज सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म. वी विल सी बोथ ऑफ देम, बट जस्ट रिमेंबर दैट टिल नाउ ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म हैज बीन परफॉर्म्ड ओनली बाय
Russian Roscosmos. Okay, and many private companies are now coming for suborbital space tourism like SpaceX, Virgin Atlantic, even Amazon's like Jeff Bezos is making one company for this. Okay, now ये चीजें इंपॉर्टेंट क्या है? There is no international space law. Okay, जो करंट ट्रीटीज हैं, आउटर स्पेस ट्रीटी, रेस्क्यू अग्रीमेंट एक्सेट्रा, दे ओनली टॉक ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, दे डू नॉट टॉक ऑफ स्पेस टूरिस्ट. तो एक लॉ नहीं है. सेकेंड, इफ यू वांट टू सेंड अ व्हीकल टू स्पेस, it is compulsory for international space law to authorize it according to Article 6 of Outer Space Treaty. But क्या है Article 6 and what is Outer Space Treaty is not important. But the problem is कि for space tourists, there is no such law or no such place where this authorization is there. So there is a lack of clarity, right? So this you have to understand that there is no international space law or no treaty that exactly defines what space tourists are. So there is a regulation gap right now. Now, what is space travel? At what point will I say that I have reached space? So, if you look at the Fédération Aéronautique Internationale, that's French for the World Aeronautic Federation, that says that an altitude of 100 kilometers. So, if you move above the Earth to a place of 100 kilometers, after that you come to space. And why? This is called the Kármán line. This is important for you to remember. Why? Because atmospheric lift no longer supports a flying object. What does this mean? देखो, when an aeroplane is there in the air, if there is a jet or an aeroplane in the air that is flying, how does the aeroplane not fall down? Because often Bernoulli theorem होता है, there is a principle that doesn't matter, but what happens is that the atmospheric air will push this plane up due to some of the design features. Due to this, there will be pressure from the atmosphere that will keep the plane high in the sky. Okay, this is atmospheric lift that works in aeroplanes. After you have reached 100 kilometer, this atmospheric lift stops. So once this atmospheric lift stops, it will be called that you have reached space. So space travel is any flight operation that takes you beyond the altitude of 100 kilometers. Now, आपको बताया था दो चीजें हैं, orbital and suborbital flight, right? अब आप याद करो, we had read on Saturday about orbital velocity. हमने पढ़ा था why do satellites not fall, right? We had read why do satellites not fall. So we had done something like this, that from here if I throw a stone at a particular speed, it will overcome the curvature of the earth and not fall down. This speed was orbital speed. ये slide में भी है, you can check. ठीक है? This is orbital speed or orbital velocity. So if you launch a spacecraft into air above 100 kilometers and you achieve this orbital speed, that means you start orbiting the earth. You start reaching a speed कि अब आप नीचे नहीं गिरोगे. That will be orbital flight. If you launch a spacecraft, ये मैं बना के दिखाता हूँ. जैसे मान लो फर्स्ट केस में दिस इज द 100 किलोमीटर लाइन. ओके, फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, आई लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट, इट रीच्ड बियॉन्ड दिस एंड इट अचीव्ड द ऑर्बिटल स्पीड, सो इट स्टार्ट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ, सो इट विल नॉट फॉल डाउन. सेकेंड केस में आई जस्ट लॉन्च्ड द स्पेसक्राफ्ट, it just went till this point but it did not achieve this speed and it then fell back to the earth. This first case of colored in blue, this first case is orbital flight because you are achieving the speed required to not fall down, which we have seen before. If you achieve this speed, it will be orbital speed. If you don't achieve this speed, you just go up, you reach 100 kilometers, maybe 120 kilometers, and then you fall down. This will be the second case, suborbital flight, that you have reached in space, but you have not reached the orbital velocity, right? So orbital spacecraft must achieve orbital velocity, that is speed required to remain in orbit around a planet, right? To orbit 200 kilometers above the earth, you need a speed of 28,000 kilometers per hour. If from the earth at 200 kilometers above the earth here, you want to orbit, the speed that you need to achieve is 28,000 kilometers per hour. If you just reach 200, don't achieve the speed, reach here, you will stay there for some time, then fall down, right? Then it will be suborbital space flight.
So suborbital flight, much lower speeds and doesn't have the power to achieve orbit. It will fly up to a certain height and then come back down when the engine are shut off. Right? Okay. Now at the top of the place, तुम बिल्कुल ऊपर पहुंच जाओगे यहाँ पे. Like let's say your suborbital flight is happening and you have done something like this is the Earth, you have launched, you have reached this place, then the engines are shut off, then you fall down. So at the top, at this place, at the top, you will achieve weightlessness. Because for some time you will be floating in space. There will be no gravity acting. Then you'll start falling down, then the gravity will be there. Right? कैसे होता है? This is actually an easy derivation of physics, but you don't need to know that. You just need to know at the top of the flight arc, at some point you will be floating. So passengers achieve a few minutes of weightlessness under zero gravity. Okay. And Inspiration 4, this is just a term. This is one of the flights by SpaceX, which is an orbital trip. So they are trying to do it. They haven't done it yet. The only orbital space tourism so far has been done by Roscosmos, which is the Russian space agency. So यहाँ पे जो main चीज है, this is the Kármán line. Now if you map it with the atmosphere, you will see 5 layer होते हैं atmosphere के: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. 100 kilometers पे somewhere in the thermosphere there is the Kármán line. Beyond the Kármán line you will go to space. तो जो मेन अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, जो अमाउंट ऑफ गैसेस हैं, दे आर वेरी लेस, so they will not support the atmospheric lift required. So now you have reached space, and this 100 kilometer is the Kármán line. This is the important thing you have to remember. Then other thing is orbital and suborbital tourism. In suborbital you will just get few minutes in space. Here you have achieved the orbit, so in orbital you can stay there as long as you want. This requires much lower speed. You fly up to a certain height and come back. This you have to achieve the orbital velocity and then come to a point where you don't fall back. So to come back also you will need another mission. It will not come back automatically. You will have to then decelerate, etc, etc. Okay, so this difference is clear between suborbital and orbital space tourism. Right, now this is the last topic which is important for today, which is difficult to understand. So if I would just give you 5 minutes, I'll also just go to the washroom and probably take some medicine, then I'll come back and then we'll do black hole, star, gravity, bending of space-time, Einstein's idea of gravity versus Newton's idea of gravity, etc. This is very interesting, mainly conceptual, and isse there are a lot of questions. Okay, you might feel मैं आपको ज़्यादा physics पढ़ा रहा हूँ, but as soon as you see the PYQs, you will realize that a lot of questions come from this. We have to understand here is gravity. We have to understand stars, black holes, and general and specific theory of relativity. Now, we have already understood as a force, right? But if you go back to the slide, it said gravity is the bending of space-time. But for now, we will understand it like a force. This is exactly what the slide said. So now we will understand gravity as a bending of space-time. Okay, we will also understand what is happening inside a star. Okay, so first let's understand gravity. Now let's assume that you are in a rocket. Okay, assume that you are in a rocket that is going up with the speed of with the acceleration of 9.8 meters per second square. This is the exact value of gravity. Gravity pulls you down with the acceleration of 9.8 meters per second square. So let's say you are in a rocket in outer space where there is no gravity and you are going up with this speed. Now you are here in this room in that rocket. Please ध्यान से सुनना है. You are there in this room inside this rocket where there are no windows. Okay, there are no windows and you don't know that you are in a rocket. Right, let me repeat. You are in a rocket in outer space where there is no gravity. The rocket is going up with the speed of 9.8 meters with the acceleration of 9.8 meters per second square. You are inside that room in the rocket, but you don't know that you are in the rocket. तुम्हें नहीं पता, right? You just think you are normally here. Now, let's say inside this room, okay, inside this room, you drop a ball. Okay, I'm standing inside this room. I don't know I'm in a rocket. I drop the ball. The rocket is moving up with the speed of with the acceleration of 9.8 meters per second square. That means at the first second the speed is 9.8, second it will be 19.6, and so on.
So if the rocket is moving up like this, what will I see? I cannot, मेरे को तो feel नहीं होगा rocket का motion. I cannot feel the motion of the rocket, right? But what will happen is that I will leave a ball like this. I have left a ball like this, right? And the ball will drop to the ground. The ball will drop to the ground. Why? It's not actually the ball dropping, but the rocket is moving up. This floor, which is part of the rocket, is moving up. So if I leave a ball here and I am standing here, right? Or if I leave a ball at this level and I am standing here, I am in contact with the floor. After some time, the floor will reach to this point because the rocket is moving up. So after some time, what will it look like? It will look like this, right? The floor has moved up. Now for me, inside the rocket, where there are no windows, where I don't know that I'm in a rocket, this is no different than being on Earth. Why? Because if on Earth I drop something like this, it will go fall down. Here also I will only see the ball falling down. I will not be able to perceive that the rocket is moving up, because even right now the Earth is rotating and revolving at a very high speed, but you are not able to perceive it, right? आपको तो नहीं पता चल रहा कि Earth rotate और revolve हो रही है. Similar thing will happen here, right? You are here, you drop the ball, you just leave the ball. For a time बाद, this floor will come up and the ball will touch the ground. So for you, this is nothing different than gravity. आपको लगेगा कि ये तो gravity ही हो रही है, right? This much is clear. I am going very slow here because this is conceptual. Have you understood this? That inside the rocket, you will not know. Please write yes in the discussions if this is clear. Good. Now let me assume abhi the rocket was going up with what pace? 9.8 meters per second square. This was the acceleration at which the rocket was going up. Now I am assuming that this rocket is going up with the speed of 9800 meters per second square. Okay, it is going up really fast. Even then I will not be able to perceive it. Regardless of the speed, I will not be able to perceive it, right? And what is this the equivalence of? Why am I making the rocket move up? I am making the rocket move up to have an equivalence with gravity. Okay, to have an equivalence with gravity, I am making the rocket move up. This is a thought experiment proposed by Albert Einstein, where he was explaining gravity, right? Gravity different from what Newton thought gravity was. Okay, so thoda I'm going slow because it's difficult to understand. So let's say the rocket was moving up at this speed. For me, it is the same as gravity. Now in the second case, the rocket is moving up with this speed. So this is like being on a planet that has a lot of gravity. This was like being on Earth because this is the value of gravity on Earth. Okay, in this case, going up at 9800 meters per second square, it is like being on a planet that has huge gravity, much more than that of Earth. Okay, now remember what is happening. This is moving up, the rocket is moving up. Let's say I am standing here and I shine a light on the opposite side of the room. Like I take a torch and I shine a light like this to the opposite side of the room. In a normal circumstance, I will see the light go exactly straight. Correct? It will go exactly straight. But if this pace of rocket is way too high, it is at 9800 meters per second square. This is the acceleration. So or let's say 10,000 meters per second square. So in the first second, if the pace is 10,000, second it will be 20,000, then 30,000. Like I'm sure you can understand, right? So the pace will be very, very high, right? So light will start traveling from here, okay, till the light reaches here. Light starts traveling from point A till the light reaches here. Some amount of rocket has moved up because it is going very fast. So it has moved up, right? So ideally it should have come here. But since the rocket has moved up, I will see the light touch here.
because this point will have reached here by this point, right? Again, I'll explain. I start from point A. I make the light go like this. Ideally, it should have hit point B. But since the rocket is going up so fast, point C has now reached point B. So what will I see? I will see that the light is going like this because I cannot perceive this upward motion. मुझे नहीं पता है कि ऊपर जा रहा है, right? We cannot perceive gravity. I cannot perceive this upward motion. This we have already established. That I will not know that the rocket is going up. Whatever speed it is, whatever acceleration it is. So I will just see that the light has reached point C, not point A, not point B. So what did I see? Because of gravity, there is bending of light. Light has bent because of gravity. Why is light bending here? It is bending because of this speed, and this speed is the equivalence. Why did I draw this? This is the equivalence of gravity. So Isaac Newton, he understood gravity as a force between two objects with the formula G into m1 into m2 by r square. But Albert Einstein said that gravity is the bending of the space. Right? Light is bending. It is because gravity has the ability to bend the space around it. It is not a mysterious force. It is the bending of space. And here the bending is exaggerated. Bending is exaggerated because of this speed. Of course, gravity is not this high. But to understand, as a thought experiment, we are doing this. Is this thing clear to you guys? If this is clear, we have understood everything. Yes, person will also move, but he cannot perceive. Right? You are moving around the sun right now. Can you perceive that you are moving around the sun right now? Are you feeling like you are revolving around the sun right now? But light you can see. Light you will be able to see. Other movements you will not be able to perceive, the way you are currently not able to perceive your movement around the sun because the speed is too high and you are too small to perceive that speed. Got it. Great. So what did Einstein say? Einstein said that gravity, unlike Newton's idea was that gravity is a force. Einstein said that gravity bends space around it. It bends space, and that is why the motion, they say, whatever implications of gravity we have studied so far. What are the implications? What have we studied because of gravity? We have studied that this is a sun. Planets are orbiting around it, right? Sun, Mercury, Venus, etc. Right? This we have studied. We know this is because of gravity. We also studied something called mv square by r. Then we saw the orbital velocity dependent on distance, etc. We saw this assuming that gravity was a force. Newton said that this movement is actually due to gravity's bending of space. Forget bending of space-time. What is bending of time? We'll understand. But it is gravity's bending of space. Let me show you a small video from Caltech, which is California's Tech University. Look at this. Okay, the professor has placed, this is like the solar system, right? What he is doing is, he is assuming that this rubber sheet of blue color is our space. He has said, space is this rubber sheet of blue color. Now, if I place an object that has mass, like the sun, which is huge, it will bend space. It should be able to explain the movement of planets around the sun. Now look at this. He has placed the sun in the center. What is happening? The sheet has bent. Now if he releases, he has some marbles in his hand. If he releases these marbles, right, you will see them revolve around the sun. If this can be explained, this revolution around the sun can be explained by this bending of space, then we can understand gravity as a bending of space. Okay, so what is happening here? Look, he will now release certain marbles. These marbles are planet. The black thing is the sun. See, can you see the revolution? This is how planets are revolving around the sun. Now here there is friction. Because there is friction, they will somewhere stop. Right? They will stop at one point because there is friction. But otherwise, in space where there is no friction, there will be no stopping. So if he releases this, can you see the planet revolving?
So here I can say that gravity is nothing but the bending of space. I assume that space is like this huge sheet, huge trampoline, and the sun, for example, has mass. So it bends space like this. So if light has to travel from here, it cannot go like this. It has to go like this because light will also be affected by gravity. Gravity bends this space. Okay, gravity bend. No, this is a 2D thing. तभी आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा कि यहाँ से क्यों नहीं जा सकती light, because this is 2-dimensional. This is actually happening in 3-dimensional thing, right? It is actually a 3-dimensional thing. So light can now not travel like this. Light has to bend because gravity is the bending of space. Have you understood this much? See, they collided with the sun because the sheet has friction. The sheet, if you put anything on a sheet, it will stop revolving after a point. But in space, there is no friction. Let's say if I have this phone, or if I have a ball and I put the ball on the ground like this, after some point it will stop because of friction. Friction will stop the ball. But if I throw a ball in space, it will never stop. There is no force that is stopping. I cannot emulate space on a trampoline sheet, but I hope the concept is clear. Good. Now what is happening is that gravity can bend the space around it in a 3D way, right? So gravity is bending of space-time. How gravity is bending of space-time? These are two links. You can see these videos on your own time. One I have shown you. There is one other one that you can see. आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा, right? I have put them in the slides themselves, and huge thanks to these channels that have created. These are American channels that have created these explanations. When you have time, you see these videos. If you are not understanding here, if you understand here, there's no problem. Okay. Now, one thing we have understood is, let's go back. One thing we have understood is that gravity is the bending of space. It is not a mysterious force between two bodies. It is the bending of space. Now, if gravity is bending of space, then at the center of a star, there is the entire mass of the star. Why does it not bend the space around it and make the star collapse? ऐसा क्यों नहीं होता कि ये gravity है, gravity should bend the space and the star should collapse. अपने अंदर ही वो collapse हो जाए. Why is this not happening? Because there is a counter force. एक और force है जो इस collapse को रोक रहा है. What is that force? That is nuclear fusion. Nuclear fusion happening in the core of the star. What is nuclear fusion in detail? We'll read with nuclear energy. But what is nuclear fusion? I'll just give you an idea. Fusion, it means two. देखो, nucleus we have read. हमें पता था atoms have a nucleus and orbits. If two nuclei of atoms, they fuse together, this fusion generates energy. This is why our sun or any other star is able to emit that huge electromagnetic radiation, because it generates energy from nuclear fusion. This fusion of two nuclei, which nucleus fuses, what happens, this we'll see in nuclear energy. But this fusion of nuclei generates a force. This generation of force, right? This generation of force stops the star from collapsing on itself. So a star has nuclear fusion in the core, which leads to electromagnetic radiation that we have seen, right? Nuclear fusion in the core that leads to electromagnetic radiation that stops the star from collapsing. So we have so far understood that gravity is the bending of space, not bending of time. Bending of time we'll just understand. So what happens to a star? How does a star form and what happens? This is basic geography given in chapter 2 or chapter 3 of the NCERT. So I will expect today that you revise it. But I'm giving you an idea. There is initially a nebula. Nebula has hydrogen and helium, two atoms at a very low temperature. Due to the effect of gravity, these particles start coming together. When they start coming together, the temperature raises, the kinetic energy raises, and there starts the fusion reaction. Two hydrogen atoms fuse to form the helium atom. How this works, we'll study in nuclear energy, but just understand for now. Fusion happens. This fusion starts generating energy. This is how a star is born. Fusion starts generating energy. This is called protostar. Pro. Science terms are common. Pro was before star. Before the original. Pro-nucleus. Before the formation of nucleus. Prokaryotic. The ancient nuclei. This is a protostar. So, ancient star.
So it is a non-illuminating. It does not generate radiation yet. In the beginning, when the fusion starts, it doesn't start generating radiation, but soon it starts generating radiation. Then it will be called a main sequence star. This much is clear. I'm going very slow here because this is very important for you to understand. Yes, good. Nebular hypothesis was given by Kant. So what have we understood? Gravity is bending the space around it. There is a star. Star does not collapse on itself because of fusion happening in the core. Fusion is nuclear fusion, two nucleus coming together. Hydrogen, two nucleus come together to form helium. This generates energy. In the beginning, it will not lead to any illumination or radiation, but finally it will lead to radiation. Which radiation? Electromagnetic radiation. Okay. So main sequence star, which is the fourth stage, is core having fusion reaction. This is RKN is reaction. Okay. This is reaction. Now, if it is red, if it is a red star, it appears red. Or if it is yellow or if it is blue. For us, stars appear the same. But I am talking about looking at them through a telescope. We have seen the idea of Vibgyor. Okay. So violet was what? Violet was high energy. Because above this there was ultraviolet. Red was low energy. Because below this there was infrared. So a red star will have less energy. Yellow will have more energy. Blue will have the maximum energy. We see all stars as white, but if seen through a telescope or through an astronomical observatory, they will look like this. Energy is increasing, size is increasing, fusion in the core is increasing. Blue has more energy, red has less energy. Now this fusion will keep on happening. Okay, it will keep on happening. Let's say hydrogen plus hydrogen is forming helium in the core. This is the fusion reaction. How it works, we'll understand. But in the core, let's say hydrogen plus hydrogen is leading to helium formation. Now, after some point, this helium will run out. Oh, sorry, this hydrogen will run out. Core is doing hydrogen plus hydrogen gives helium. But after some point, this hydrogen will run out. Right? This hydrogen will end. Right? If it had 10 megatons of hydrogen, then at some point this hydrogen will exhaust. Once the hydrogen in the core runs out, it becomes unstable. Okay. So once it becomes unstable, it forms a red giant. Why red? Because the energy has now reduced. The energy has now reduced because the fusion reaction has stopped. Now originally kya tha? Originally there was radiation to stop the collapse of the star. There was radiation to stop the collapse of the star. But now the fusion that was leading to this radiation has now stopped. You don't have fusion reaction anymore. So now there can be a collapse. Right? There can be a collapse. Now, if the mass of the star is less than 1.44 that of the sun. Okay. If the mass of the star is less than 1.44 that of the sun. If sun's mass is x, it's 1.44 into x. If the mass is less than that, it will lead to the formation of white dwarf or black dwarf. Planetary nebula, you know what a nebula is? Planetary nebula, white dwarf and black dwarf. This will happen if the mass is less. But if I don't know why this has gone here, I'll just write it. If mass is more than 1.44, if the mass is more than 1.44 that of the sun, then it will cause a supernova explosion. Supernova explosion. Now, again, why is there a difference here? Why is this difference? Because now gravity is the thing that is acting. Radiation has stopped. And gravity is a function of mass. Right? More mass, more gravity. This we know. So mass when greater than 1.44 that of sun will lead to supernova explosion. And this limit is the Chandrasekhar limit. Even this limit is the Chandrasekhar limit. We'll understand. So supernova explosion happens in stars whose mass is more than that of sun. 1.44 times more than that of sun. After the supernova explosion, again, if the mass is less than 3 of sun, less than 3 times that of sun, it will lead to a neutron star or a pulsar. Now remember, neutron was something in the nucleus, so it has something to do with what is happening in the nucleus during fusion.
What it is exactly is not important, or it is important, then you have to study it in geography, right? But mass less than 3 times that of sun will lead to formation of neutron star. If mass is more than 3 times that of sun, again this is known as the Chandrasekhar limit. If mass is more than 3 times that of sun, then there will be so much gravity at the center after radiation has stopped that everything will be pulled in. This will form a black hole. Okay, now here this star is made. This is made because in the red giant, lithium concentration increases due to helium flash. This is just a fact that you have to remember. This is the Chandrasekhar limit. Even this is the Chandrasekhar limit. Even this is the Chandrasekhar limit. Okay, and Chandrasekhar was of course an Indian scientist. So if a star is forming, it will first form from nebula, then gravity will make it come together, then fusion reaction will start, then main sequence star, then hydrogen will run out, then it will form a red giant because the energy has reduced. Now if its mass is less than 1.44 that of sun, it will lead to planetary nebula, white dwarf, black dwarf. If its mass is more than 1.44 that of sun, it will lead to supernova explosion. Now again there are two possibilities. Mass is 3 times that of sun, lead to black hole. Mass is less than 3 times, pulsar or neutron star. Let me now explain to you the meaning of the word black hole. Now what we have to understand, what is a black hole? Black hole was formed when the mass of the star was greater than 3 times that of the sun. So huge star is there, right? And this is just the lower limit. Mass can be 20,000 times that of sun also. Okay, so if the mass is 20,000 times that of sun, for example, there is so much gravity, and gravity is what? It is the bending of space-time. So the gravity is so much that even light cannot get out. We had read how colors are perceived. This shirt is gray. So what is it doing? It is taking white light. It is taking the photons. Electrons are moving up. When electrons come back, they are emitting the gray light. So you are seeing gray. If light comes in, but it is trapped, light cannot get out, it will appear completely black. What am I saying? I am saying that in case, if you look at one thing, how do you see the color? Light comes in, electron goes to a higher level, then electron comes back, then it emits a photon. So if this is white light, a particular thing emits red, so you then see red. But if there is so much gravity in one place, if there is so much gravity, this collapse of entire mass into one place, there is so much gravity that light enters, but it starts bending, and then it is never able to get out. So you will never be able to see this thing because light will not come to your eye. So it will appear completely black. And this is why it is called a black hole. A black hole is a place where gravity pulls so much that even light cannot get out. The gravity is so strong because all the star's mass has been collapsed into one single point. Matter has been squeezed into a tiny space. It has been collapsed into a single point. This can happen when a big star is dying. Our sun will never form a black hole. Why? Because the mass required is 3 times that of sun minimum. Since light cannot get out, they are invisible. This is what a black hole is. Now, in the center of a black hole, what was there in the center of a black hole? All the mass of the star had collapsed into the center of the black hole. तो इसे हम क्या कहते हैं? Singularity. It is a one-dimensional point which contains huge mass in infinitely small space. सारा star collapse करके it comes to one very small point, infinitely small point having a lot of mass. So huge mass, very small point called singularity, gravitational singularity at the center of a black hole, right? Because of this huge mass, gravity becomes almost infinite, right? And light, when it comes like this, it will start bending and it will not be able to escape. This is a black hole. Now, what are the parts of a black hole? Singularity is at the center. This we have seen, where all the mass has collapsed. Now let's say light is coming like this around the singularity and it just keeps going like this because it can't get out. But let's say it comes from here.
or even farther, light is coming from here, even then light will be bent, but there will be some point where it will be able to escape. What am I saying? अगर बहुत दूर से light आए, in the first case, if there is infinite bending, okay, in the first case it is very close, so there will be bending and it will not get out. But if it is coming from this far, again it will bend, but there will be some distance जहां पे gravity का impact खत्म हो जाएगा. एक limit है ना उस gravity की. So at that one place, the light will be able to do this. It will be able to bend and then still get out. Right? This is the event horizon, the last place where light can escape. So here light comes, can't escape. From here can't escape. But this far, there will be some point where light can escape. This is the event horizon. Let's say you look at this. This is a black hole at the center. Okay. Light is coming. When it is close to this, it cannot escape. But the last point where it starts to escape, that is the event horizon. The radius around the singularity where the matter energy cannot escape. The point of no return. So the last point is the event horizon. Just beyond the event horizon, light can escape. Right? Itna clear hai? This is a black hole. At till this point, if you come close, the black hole will take you in. But here you can escape. So the final point where you can escape, and beyond that, यहाँ पे you can escape, यहाँ पे you can escape. So ये जो first point of escape है, that is the event horizon. Okay, all right. Now what is the radius of this event horizon? ये radius, ये this radius. This is called the Schwarzschild radius. Okay. This is the Schwarzschild radius, the radius of the event horizon. So now this last thing is the event horizon. Okay, now there are some other type. See, this is what a black hole looks like. This is that rubber sheet. It has so much mass that it bends it this much because of the huge gravity. So till here you can't escape, but there will be some point where you will be able to escape. That some point is the event horizon. There is a singularity at the center of a black hole. There is a relativistic jet. What is a relativistic jet and what is relativity? This we'll see. Let's say a star that is going in the solar system, or not in the solar system, in the universe. A star comes this close. If it comes beyond the point of the event horizon, the black hole has so much gravity that it will pull the star in also. Because it is bending it, the star comes here, here, here. Once it comes here, it will go inside. Right? This, and finally falling in. This falling in is the event horizon, and after this falling, whatever the black hole will release after absorbing the entire star, this is called the relativistic jet. Okay. Then accretion disk. Accretion disk is gas that revolves around the black hole at immense speed. This is accretion disk. Again, you just need to know the meaning, the one word that this is connected to the black hole. Accretion disk is gas revolving around the black hole. This thing right here, right? There is singularity at the center. There is relativistic jet that once the star falls in, it will start releasing certain particles, right? This will be the relativistic jet, and we have seen event horizon, the final point. Okay, this is the parts of a black hole. These are the categories. Stellar black holes, when the mass is about 5 times to several tens of 5 solar masses. So let's say 5 to 50. Then if the mass is 10 raised to power 2, means 100 to 10,000 times that of sun, then it will be intermediate mass, right? Then supermassive, very huge black hole. So these are the categories of black hole. Just read this once. This is not important, but it's बहुत easy to understand. It's just on the basis of how much the star is bigger than the sun. And then there is a miniature black hole. Miniature black hole is 148 femtometers. That means very small. It is hypothetical. Okay, this currently so far has not been proven to exist. It is a concept given by Stephen Hawking, but we have not seen a miniature black hole yet. Okay, so far are things clear? What is a black hole? What are the parts of a black hole? And why there is no escape of anything from the black hole? Now, how do you take a picture of a black hole? If no light escapes, if light cannot escape, how do I see a black hole? How do I visualize it? How do I take a picture? How did I get this picture? If there is
if light is not escaping. So I will take a picture of the event horizon, because that is the place where the last photon is there. So that ring, there I can get the picture. So in 2019, the first optical image of a black hole through the Event Horizon Telescope was taken. It was just outside the region of black hole, right? This was the name of the galaxy, and it shows the last photon, that beyond which it will fall inside, right? So it was called the last photon ring. Second black hole whose photos has been taken is this Sagittarius A star, right? And again, Event Horizon Telescope has taken this photo. So you understand what event horizon is, why I cannot take a photo directly, because light cannot escape. So what am I taking the photo of? I am taking the photo of the last thing. All right. Okay. Now in 2020, the Nobel Prize in Physics was given to Mr. Roger Penrose, Reinhard Gesell, and Andrea Ghez, basically saying that black hole formation is based on the general theory of relativity. What is general theory of relativity? We'll see. Okay. So now we have understood black hole. We have understood this Sagittarius A star was the second black hole. It is a supermassive object. Okay. So these two people were given Nobel Prize. Why? Because at the center of the Milky Way galaxy, they said there is a black hole, Sagittarius A star, whose photo has also now been taken. Event horizon is clear. Black holes, the idea of black holes is clear. Why black holes are forming, this is clear. What is general theory of relativity? General theory of relativity is nothing but saying that gravity bends space. So I have created the idea of black hole on this basis, that gravity bends space. So the idea of a black hole comes from the theory of relativity, the general theory. There is a specific theory also. The general theory of relativity says that matter or gravity bends space. And this person, Roger Penrose, said that these black holes, they are an application of this general theory of relativity. He proved this mathematically, and therefore he was given the Nobel Prize. So why are we doing black holes and research? Like, why are we doing this research? Because we want to see the evolution of galaxies. We want to see the distribution of dark matter. What dark matter is, we will do tomorrow. Okay. We want to see how stars are formed. We want to see what gravitational waves are. This we will see today. We want to test the general theory of relativity, and we want to see light behind a black hole bending. All of this मैं भी आपको समझाता हूँ. देखो, star formation. अगर हम black holes देख रहे हैं, उनकी destruction देख रहे हैं, right? How supermassive black holes are there. These things have a role in star formation. So if you study black holes, you might get an idea of star formation. Now, second thing is gravitational wave. Now, let's see what gravitational waves are. Okay, हम देखेंगे. I'll just यहाँ पे अभी बस ये याद कर लेते हैं कि ब्लैक होल से हम ग्रेविटेशनल वेव से कुछ रिलेशन है. We'll see what gravitational waves are. ठीक है. Then there is general theory of relativity. What is general theory of relativity? That gravity bends space. Okay. Bending of light. Now, there is a black hole. If light comes this much, it will bend. But it will come from far, then it will bend like this. Right? So this bending of light, this also can be studied with black hole. So light does not always travel in a straight line. It can be bent by gravity. Okay. Now, general theory of relativity was given by Albert Einstein. He said that gravity, rather than being an invisible force that attracts objects, right? Rather than being an invisible force that attracts objects, it is the warping or bending of space, right? Warping also affects time. How? We'll see. Okay. So the sun is massive enough to warp the space around our solar system, the way we have seen on that sheet. As a result, Earth and other planets are moving in curved path, right? It also explained the precession of Mercury. What is precession? If you see Mercury's orbit, if this is the sun, Mercury's orbit is like this. It will start here, then it will go here. This is how Mercury orbits the sun. Now, this could not be explained by considering gravity a force. But if we consider gravity bending of space-time, then we can explain this.
So this, if somebody has given a theory, it has to be proved, right? So this precession of Mercury was explained by general theory of relativity. What it says, that gravity bends space. Okay, now how was it confirmed? In 1919 they measured the deflection of light from distant stars. There is a distant star here, light is coming to the earth, it should ideally come in a straight line, right? But let's say there is some main gravitational object here, so it will bend the light and the light will come here. So this bending of light was confirmed in 1919, and if gravity can bend space, only then light can be bent, only then light cannot be forced to take a straight line, right? This was confirmed in 1919. And in 2016 there was the discovery of gravitational waves. This also confirmed general relativity. Now let's see what gravitational waves are. Okay, now ye dekho, let's say a pair of black holes, 1 and 2, are revolving around each other. Both are causing, pair of black holes are revolving around each other. Both cause what? Bending of space. Now when they come close or they collide or they move around each other, right, they will send, this bending will be sent as ripples. Like when you throw a stone into a pond, there are ripples, right? These ripples, if considered at the level of space, because there are two very massive heavy objects rotating around each other, they will cause these ripples too, because this will bend space-time like this will bend space-time like this. When they rotate around each other or revolve around each other, then this bending will be even greater. There will be ripples, right? I hope you're able to understand this. Just again imagine that sheet and two very massive objects. If I rotate like this, the ripples will be sent. These sending of ripples is what is the meaning of gravitational wave. Because gravity is bending of space, two major gravitational objects, if they are coming together, if they are rotating around each other, if they collide, then they will spend these ripples in space, and this is what a gravitational wave is. Now if gravity was a force, this gravitational wave would not exist, but since gravity is bending of space, then these gravitational waves can exist. What I was saying about Mercury's orbit is that Mercury, when it orbits the sun, if this is the sun, then Mercury's orbit is not like this, the way other orbits are. Mercury's orbit is like this. Okay, something like this. So it never forms a complete ellipse. It will start from here, it will end here, then it will start from here, it will end here, start from here, end here. This is how Mercury orbits the sun. This phenomena is called precession, not having an exact orbit. This can only be explained if we consider gravity bending of space-time. If we consider it a force, it will never be explained. Okay, then we have read that bending of light was seen in 1919, and this bending of light confirmed that there was general theory of relativity. Then we read gravitational waves. Gravitational waves are ripples in the fabric of space-time. Why are these ripples happening? When two massive objects are moving around each other, they are both bending space-time, so they are causing ripples. If they collide, they will cause a ripple. The way if you throw a pond throw a rock in a pond, it will cause ripples. A massive object, if it starts rotating in this sheet, which is space, it will cause ripples. This is a gravitational wave, and then testing this gravitational wave was again a confirmation of general theory of relativity. If gravity was only a force, you could not understand it as, there would be no waves, right? It's just a force. But if it's bending of space-time and two massive objects collide or move around each other, it will be gravitational wave. Now, how do you test a gravitational wave? Right, how do you test a gravitational wave? Gravitational wave is this: squeezing and stretching of space, squeezing and stretching, ripples and ripples of gravity, so squeezing and stretching. So we have something called a laser interferometer gravitational wave observatory.
Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO. It has these two huge scales of 4 km each. When a gravitational wave occurs in space, it causes very small level of squeezing and stretching. So LIGO is used to detect the squeezing and stretching. The squeezing and stretching. Let's say two black holes, they collide. It will lead to what? It will lead to a gravitational wave. And this gravitational wave can be measured through a LIGO. Sorry, LIGO has two huge scales like this. So when some stretching or squeezing happens, there will be change in this distance. Change in this distance. This very small change is measured at the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. This is what the LIGO is. Now, there is another way to see gravitational waves. This is testing gravitational waves on Earth, which is the LIGO. But if you want to see gravitational waves in the sky, that mission is the ELISA. It has gravitational waves it has the mission to explore gravitational waves from space. So what does it have? You see, what were we doing? We had one scale this long, one scale this long. When the squeezing and stretching happens, we can test the scale. We can test the change. This very small duration change that will happen, that we can test because of that change in fabric of space-time, the squeezing and stretching happening in space-time. Then we have ELISA. ELISA is what is there in space. This we were doing on Earth at LIGO. We are doing the same thing in space. What does it have? It has 3 satellites, right, with 1 kilometer long apart in a triangle like this. Now when there is measurement, using lasers you do the measurement, right? So once gravitational waves come, there will be squeezing and stretching of this sheet, which is space. So this distance of 1 million will change by very small distance. So that change because of the squeezing and stretching. So if it was 1 million kilometers earlier, then it would squeeze, then it would stretch, right? This squeezing and stretching, which is very small, is the way gravitational waves are measured, right? This frequency, it can now in space, if you do this in space, you can measure very much more sensitively, right? Why sensitively? Because there is no gravity of itself. Earth has a gravity of itself. So if you do the LIGO experiment on Earth, the detection cannot be that sensitive because Earth's gravity will also distract it. But in space, right, it is even better. So these are the two methods. This is what ELISA looks like. It has 3 satellites, lasers to check the distance. Once there is a ripple in the fabric of space-time, this distance will change very so slightly, and that would be used to detect that a gravitational wave has come. Okay, all right. So I think it would be okay if we stop here. Please revise this.